So how we perform regression analysis using SPSS? I will use a data set which you have but you don't have. मतलब डेटा सेट आपके पास है लेकिन आपके पास नहीं है. That data set is not shared via Telegram or mail link, but it is in your SPSS files. Okay. If you have SPSS, you can go through that file and open your data set. If you don't know how we open the data set, then the path is go to file and click on open. When you click on open, you will get such kind of a window which you can see. In this, you will see this PC or computer somewhere written. Select that one. When you click on this PC, you will get your different drives, C, D, E, F, whatever you have in your system. Then in open C drive. If your system is old, you have only program files. If your system is new, you have two things, program files and program files x86. Okay. If you have program files x86, go in it. If you have only program files, then go through program files. अगर आपके पास दो फोल्डर from beginning, go to file, click on open. There will be option data set. Click on that. Then go to my computer or this PC, whatever is there. Then go in C drive. Okay. So in this, I think it will be in program x86. In program x86, there will be a folder IBM. Open IBM. In IBM, there will be SPSS. Just a minute. Then you will open the folders. Then you will got a English folder in last in SPSS. Okay, you will go in SPSS, then statistics, then in English, and then you will get a folder examples. पेन ड्राइव इसमें से SPSS के अंदर जाकर के कार सेल्स अनप्रिपेयर्ड का डेटा डाउनलोड करो. सर वाले में है नहीं. That will be used by Masood sir. आपके SPSS फाइल में होगा. Then in samples, there will be a file named as car sales unprepared. Okay. Go to file. Then there will be option open. There will be option data. Click on that. You are going through output window. Go through data window.
There will be two windows, one will be data and one will be output. Cars unprepared.sav. File open, first option will be data. Okay. Yes, it is in English. I am again repeating, go to open data, then this PC, go to C drive, then program x86. In that option will be IBM. There will be SPSS. Under SPSS, there will be a folder statistics. Go in statistics. Under that, you will have examples. Under example, there will be a folder English. Under that folder of English, you have data car sales unprepared. Open that data set. This data set has certain variables. सभी का ओपन हो गया. कार सेल्स अनप्रिपेयर्ड. Okay, there are certain variables. One is manufacturer, other is model, third is sale, fourth is resale, fifth is type, then price, engine size, horsepower, wheelbase, width, length, curve weight, fuel capacity, and fuel efficiency. Please make silence. Otherwise, you will not get anything. Okay, what are these variables? Sales manufacturer indicates the manufacturer of car. Model indicates which model of car is available here. Okay, in your data set. Sales shows how many units of the cars are sold. Resale indicates what is the resale value or resale price of the car. If you purchase, आपको 5 साल 10 साल बाद कार बदलनी है, you will sell your first car. आप उसको बेच दोगे, ठीक है, तो आपको कितना प्राइस उसका मिलेगा. दैट इज 4-year resale value. It is the resale value after 4 years. Then I am not interested in type. Price, what is the actual price of the car at current time. Okay. Then अगर आप कार परचेज करने जा रहे हो, if you are going to purchase car, which qualities do you prefer? Its fuel efficiency should be high. Its fuel capacity should be high. Its engine power should be high. If that are not good, you will not like to purchase the car. As I suppose, the look of car is not important for you. The look of its width and length is not important, but its fuel capacity, fuel efficiency, and its engine size, engine power, that are also important. If you go to purchase the bike, also you see these things. If you are going to purchase, इंजन की पावर कितनी है, 100 सीसी का है, 200 सीसी का है, 50 सीसी का है, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. ओके, दैट इज इंजन साइज. ओके, एंड वो कितना फ्यूल हम उसमें कंटेन कर सकते हैं. एक बार में 30 लीटर आता है, 50 लीटर आता है, 20 लीटर आता है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. और in 1 liter it is going to 20 kilometer, it is going to 30 kilometer, it is going to 100 kilometer. That is also important for us, because that
helps in our pocket money. These things are important. Okay, so we mind these things. So that are the data which things are important while purchasing a type of car. So if its qualities are good, obviously its price should be high. Okay, so quality should be directly related to the price. So I am going to plot the regression of price over these different variables. So for this, first work is to plot the graph. So first we make a scatter plot. I am considering only two variables at first. One is price, other is its 4-year resale value. Okay. So to make the scatter plot, we go to legacy dialogues. Then there will be an option. We go to graph, then to legacy dialog. There will be an option scatter or dot. Okay, you can see there. Click on that option. When you click, you will get a window which have 5 options: is simple scatter, matrix scatter, simple dot, overlay scatter, 3D scatter. In our case, we are considering only two variables, so we are interested in only simple scatter. Okay, click on simple scatter, then click on define. I am repeating, click on simple scatter, then click on define. Then this window will be open. When you click on define, this window will be obtained. I am taking 4-year resale value as independent and price is dependent. Okay. Generally, 4-year resale value depends upon the price. But I am going to purchase, then how much its value will be after 4 years, that is also important. So we can take 4-year resale value as independent variable also. So price in 1000 is dependent, we take it on y-axis. Dependent variable should be represented on the y-axis. And independent variables must be taken on x-axis. So we take 4-year resale value on x-axis. Okay. Then click on OK. That are not important. When we want to see it separate for groups, then we can use set markers by or label case by. That you have an option type. Okay, if you want to see type for type 0, which values are representing, and for type 1 which values are representing, then you can set marker by that. Then click on OK. You will get such type of graph. Now you can see that it is going diagonally upward. Okay, so it's all the points may not be on same line, but overall impact must be you can draw a line considering maximum points. Okay, so we can draw a regression line using these points. So overall impact that
If one variable is increasing, other is also increasing, and variables are linearly related. Okay. If we have more than one independent variable, then what we can do? In this situation, we have only one independent and one dependent. If there are more than one dependent, then we cannot use simple scatter. Then in that case, we use scatter matrix. Again, we go to graph, legacy dialog, then scatter. When you click on scatter, you will get again same window. Here is second option, matrix scatter. Okay, click on that, then define. Then click on define. Now you have not to specify which variable is independent and which variable is dependent. You can take all the variable in box matrix variable. There are several box. We are considering matrix variable. It is used to plot the matrix, scatter matrix. I am taking price in thousand first, then engine size, horsepower, and other variables also. Okay. Price in thousand, and after that, how much variables are available? We are taking all these variables as matrix variables. Hmm? No, I am saying price in thousand and after that, not before that. I am not taking variables which are before price in thousand. Okay. String variable cannot be used for the graph. Then click on OK. When you click on OK, you will get such type of graph. You can see price in thousand in row as well as price in thousand is in column. Okay. In matrix, we use rows and columns. Okay. If you remember matrix, you have studied in interlevel, whether you have studied mathematics in UG and PG, but you have studied mathematics in intermediate, and there was matrix. Okay. So the variables which are common, that is diagonal, that are blank. प्राइस इन थाउजेंड का प्राइस इन थाउजेंड के साथ में आपको स्कैटर प्लॉट नहीं मिलेगा. इंजन साइज का इंजन साइज के साथ में प्लॉट नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन. एंड ऑफ डायगोनल, above of diagonal are similar as below of diagonal. You can consider above diagonal or below diagonal only. Here you can see with price in thousand, engine size is approximately linearly related, horsepower is linearly related, then curve weight is linearly related. Okay, these three are observed that these are linearly related with price in thousand. Any doubt you can ask. Any doubt? So may I move forward? आपको ये देखिए, ये
अगर आप इसको देखेंगे, इंजन साइज एंड प्राइस इन थाउजेंड के बीच का ग्राफ है, ये आपको ओवरऑल इंपैक्ट एक लाइन का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन की जगह पे एक कर्व शेप दिख रहा है, ओके। सो इट इज लीनियर, इट इज कर्व, okay, but graph is very much smaller, so you cannot just identify. You can use simple scatter for each pair of variables separately, okay. If you want overall impact much larger, you can use a simple scatter for one as price in thousand and one variable one by one. First you can take engine size, then you can take horsepower, then you can take wheelbase as x variable, okay. Now, since some variables are linearly related, we can check how much strong the relationship is. That is, what is the correlation between the variables. Go to analyze. Okay. There will be option correlate. Here it is correlate. And then go to bivariate. Click on bivariate. You will get this window. This option is used to obtain correlation between any two variables or any pair of variables. You can use at least two variables. Okay. You can use 2, 3, 4, 5 or any number of variables in this section known as variables. So I am taking price in thousand, engine size, horsepower, width, and up to last into the variables. Okay, price in thousand and after that. And there are three options of correlations: Pearson's, Kendall's, Taubes, and Spearman's. Okay. When we go for regression analysis, we use only Carl Pearson's correlation coefficient. So we take Pearson's and then click on OK. Here it is Pearson, it is Kendall's, Taubes, it is Spearman. We are going to perform regression, so we prefer Carl Pearson's regression coefficient. Then click on OK. You will get such type of matrix. I am interested only the correlation of the variables with price in thousand. So I will consider only first row or first column. Okay. So engine size 0.627. There are three values. One is Pearson's correlation. Second is SIG, that is also called as T value. Third one is N, that is total number of observations. So the correlation of price in thousand with engine size is 0.627. You can interpret that there is a positive relationship. That means if engine size increase, price will also increase. And value 0.627 indicates that the correlation is moderate. Okay, not high, it is moderate. 0 to 0.35, it is taken as slight. 0.35 to 0.75, generally it is taken as moderate. And above 0.75, it is taken as high. Okay, so engine size is between 0.35 and 75, so it is moderate. And p value is less than 0.001, which indicates it is smaller than level of significance, that is 0.05 or 5%. So it is
significant, and the number of observations used to calculate is 155. Okay. Then horsepower, again the correlation is positive. That means horsepower increase, then price will also increase. It is significant and number of observation is 55. One result which is not, I think, is very much good. If you see fuel efficiency, in my opinion, if fuel efficiency increases, then price should also be increased. But we are getting negative correlation. It may be due to data availability of the data. It may be vary. You are getting correlation as negative. That means fuel efficiency increase, then price will decrease. And number of observations are 153. Remaining are considering 155. Curve weight is considering 154. Fuel efficiency is considering 152. Why this difference occur in number of observations? If you go to your data, yes, you have 157 observations. Okay. For the pair, there in engine size and price, there will be 2 observations missing. For price and fuel efficiency, there are 4 observations are missing, either in fuel efficiency or in price. So due to missing observations, number of observations for calculation of correlation may vary. Okay. Here you can see that one observation 110 in fuel efficiency is missing. Similarly, if you check, you will get one more observation, number 34. Similarly, you will get 2 more observations. One in price, it is observation number 3 and observation number 34. Okay. So in this manner, 4 values are missing. So you can not get all the observation for calculation. But that number of observation must not be larger than number of observation in your data set. There are 157 pair of observations or group of observations. So you will never get 158 or 160 observations for calculation of correlation. You will get either 157 or smaller numbers. So some of the variables are highly correlated, some are moderately correlated, and there is one variable, length, and other width, wheelbase. These 3 are slightly correlated. 0.111, 0.329, and 0.157. Okay. Then we will go to perform regression analysis. For regression analysis, go to analyze. There will be an option regression. In regression, there is an option linear. Okay, click on that. When you click on linear, you will get this window. In this window, you have a list of variables, then dependent, then independent, then selection variable, label case. We are not interested in that. Then WLS weight. If we are using weighted least square method, which generally you are not familiar, then we use WLS weight.
but generally we use OLS method, so we are not using WLS weight. Case level is a separate thing. Selection variable, if you want to perform regression analysis as you have vehicle type, for vehicle type 0 separately and for vehicle type 1 separately, you can use selection variable. Okay, whether it should be selected for variable vehicle type is equals to 1 or vehicle type is equals to 0, you can use selection variable, but I am not going to use. So there is dependent. You can take only one variable as dependent. There should not be more than one variable as dependent. केवल एक ही वेरिएबल का डिपेंडेंट में यूज करेंगे. I am taking price in 1000 as dependent. Then remaining engine size, horsepower, wheelbase, width, length, curve weight, fuel capacity, and fuel efficiency. All are taken as independent variables. Okay. Is it clear? उधर से sound off. Then click on OK. When you click on OK, you will get a number of tables. First table is variable entered oblique removed. So first column is model. You are using single model. Variables enter. All variables are entered. No one is removed. And method uses enter. Okay. How it changes, I will tell you later. Method is enter. Then second table is model summary. It is an important table. It has certain values R, R square, adjusted R square. Okay. R square is important for linear regression. It tells how much percentage of variation in your dependent variable can be explained with the help of independent variables. ठीक है? जितनी how much larger the value, you will get better results. ठीक है. आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपका मॉडल उतना ही अच्छा माना जाएगा. So here R square is 0.793. That means the independent variables can explain 79.3% variation in the dependent variable. Okay. Adjusted R square, that is 0.782. That is adjusted due to number of observations and number of variables, as R square is affected by both these things. If you increase the number of variables, R square change. If you increase the number of observations, then R square also change. To remove this effect, we use adjusted R square. Adjusted R square indicates that 78.2% variation in your dependent variable can be explained with the help of independent variables. Is it clear? Adjusted R square is used as R square is affected by number of observations as well as number of variables. R square effect is affected. To overcome this, we use adjusted R square. If you change the number of observations, then automatically R square will be changed. नहीं किया, but if you change, then it will be affected. Okay, but adjusted R square will not be affected or affected lesser as compared to R square. Generally, we interpret with the help of R square, but sometimes R square is larger, adjusted R square is very much smaller as compared to that. In that situation, your model is not considered to be good. Okay, so that values comes out to be approximately similar. Not exactly, but somehow similar आनी चाहिए.
Next table is ANOVA. It is used to check whether our model is fitted good or not. That is, we take two hypotheses. One is null hypothesis. Model is not fitted good. That means our all the regression coefficients are equal to 0. And if regression coefficients will be 0, you will get null model or you will get no model. So that hypothesis should be rejected. Alternative will be the model is fitted good. That means at least one beta is significantly different from the 0. If any one is different from 0, your model comes out to be significant or better fit. ANOVA table is used to check whether your model is fitted good or not. Null hypothesis is taken as model is not fitted good. Alternative is taken as model is fitted good. Model is not fitted good. That means all the regression coefficients are equal to 0. And alternative, at least one is significantly different from 0. If at least one is significantly different from 0, your model is said to be good fitted. R square tells how much percentage variation is explained. Value is higher, model is better. If you are using 2 or 3 models, okay, then R square can compare the performance of these models. Okay, which model have higher R square, that will be preferred. But ANOVA tests about a particular model, whether it is fitted good or not. Okay. So here you will see p-value is smaller than 0.05. That is SIG is less than 0.001. So you can say that your null hypothesis is rejected and your model is fitted good. Now model is fitted good. That means at least one in regression coefficient is significantly different from 0. Now, which one is significantly different from 0? Whether one is significantly different from 0, two are significantly different from 0, or all the variables are significantly different from 0. That is obtained with the help of T statistic, which you will get in next table, that is coefficients. So in coefficients, there are some columns. First one is model. Second one is independent variables. It here name is not mentioned, but these are representing independent variables. Unstandardized coefficients, then their standard error, then standardized coefficient, then T statistic, then P value. So we are not interested in constant. Constant will always be present in the model, whether it is significant or it is insignificant. Okay. So we are not bothering about constant, whether it is insignificant, it is equal to 0. We have not to bother about that. It may become to equal to 0. It may be different from 0. That will not affect the model. Y is equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2. So which are affecting by x, beta naught, beta 1 and beta 2. That should not comes out to be 0. So for engine size, T is 0.02, which is smaller than level of significance. So it is significantly different from 0. Second one, horsepower. It is also significantly different from 0. That is that it is also contributing in the model. Wheelbase 0.673. It is larger than 0.05. So it is not a suitable variable for our model, as its regression coefficients comes out to be equal to 0. Similarly, weight is not
width is not significant, fuel capacity is not significant, and fuel efficiency is approximately on boundary line. We compare with 0.05, it is approximately 0.042. We can consider it as significant, but if we increase the number of observation, maybe it become insignificant. Okay. So some engine size, horsepower, length, curve weight, and fuel efficiency are considered as significant. Other are insignificant. So you can reduce your model only to 5 variables. Okay. Why such thing occurs? Some are significant and some are insignificant. Why? Why not all the variables are significant? If you remember yesterday's lecture by Sanjay sir, he has told about a concept of multicollinearity. What is multicollinearity? Multicollinearity said that if independent variables are related to each other, then problem of multicollinearity occurs. That means maybe engine size and horsepower may be related. Generally होते हैं. If you increase the engine size, automatically horsepower of vehicle will increase. Or if you increase the fuel capacity, then curve weight will also increase. Okay. So things are interdependent, or you can say variables are interrelated. How you can check? Go back to your correlation matrix. If you see the now columns of other variables other than price in 1000, here you will see that for horsepower and engine size, correlation is 0.837. That means engine size and horsepower are highly correlated. Similarly, engine size and width are also correlated. Wheelbase and length are correlated. Wheelbase and width are correlated, and so on. Similarly, engine size and curve weight is also correlated. So you can say that the problem of multicollinearity occurs in your data set. Okay. Hmm. Hmm. That may be a reason. So that is also interdependent. If you increase the engine size, then you can see the fuel capacity is negatively correlated, minus 0.735. Okay. If you increase engine size, fuel efficiency will decrease, or if you increase fuel efficiency, that will be decreased. Okay. So that means your data set has problem of multicollinearity. Yes. I am going. I am going. I remember that I have forgot about to telling about it. Okay. So your data set has problem of multicollinearity. How we can remove, we will discuss. But as she remind, we have forgot about unstandardized coefficients. Unstandardized coefficient tells if we change one unit in independent variable, how much change occur in dependent variable. That means if for engine size coefficient is minus 3.853, it indicates if engine size is increased by 1 unit. Okay. Generally, engine size is taken as cubic centimeter or centimeter cube, cc. Okay. If it is increased by 1 cc, then price will reduced by 3.853
3 units. Okay. Here in data set, price is in dollars. So if you increase inject size by 1 cc, price will be reduced by $3.853. Yes, regression line को represent कर रहे हैं, but it tells what change would occur in dependent variable if 1 unit is changed in independent variable. Just a minute. These are unstandardized coefficient. Using that, you can write the equation. It is not writing in that. Right. So you can write equation. Price is equals to 23.107. You can write your model as price is equals to 23.107 minus 3.853. That is first standardized coefficient into engine size. Okay. Then plus 0.263 into horsepower. Then minus 0.064 wheelbase minus 0.429 into weight and so on. Okay. So it is your model. Using that unstandardized coefficient, you can write your model. And it tells what changes would occur in dependent variable when you change in, you make changes in dependent variable. Now it is clear? Okay. Now we have the problem of multicollinearity. There are two methods to remove the multicollinearity. One is available in regression and other was told by Sanjay sir, if you remember. I am not using his data set, but I am going to use that procedure. Okay. So first method you can use, go to analyze regression linear. We are not interested in standardized coefficient that are generally not used. Okay. That are standardized to make that lie between -3 and +3. But we want actual change, so we not consider standardized, we consider standardized. Sorry, unstandardized. Yes. So we go to linear. Again, go to regression and go to linear. Now here you see there is a option enter. If you click on that, you will get a number of methods. Stepwise, remove, backward, forward. Okay. I am going to use forward. Its complete name is forward selection method. In forward selection method,
we start with the model y is equals to beta naught. Okay. Then among variables, we check which is affecting the dependent variable mostly. Okay. Which variable affect the dependent variable very much high as compared to other. That is first introduced into the model. Then our model will become y is equals to beta naught plus beta 1 x1. Okay. Then among remaining one, then we again check which one is affecting most. That is among x2, x3, x4, x5, and x6. Suppose it comes out to be x3. Then our model will become y is equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 3 x3. Similarly, we repeat the process until all the significant variables are included. Automatically, insignificant will be removed, or they will not come considered in the model. So in this, moving step by step, we can increase the number of variables in our model. Okay. So it is the forward selection method. Then we go to statistics. There is an option statistics in regression. In this, there is option R square changed. You can click on that. Then continue. And then click on OK. Go into the regression, linear, then use in same manner, dependent will be priced in 1000. From engine size to fuel efficiency will be independent. Then here is the option method. Instead of by default, it is enter, change it to the forward. Okay. Then go to statistics, click on R square changed, and then click on continue. Then click on OK. Is it clear? Now, as you have asked earlier, ANOVA and R square. Now you can see when we are increasing the variables, R square is also increasing. When we have model beta naught plus beta 1 x1, our R square is 0.707. When we include one more variable, that is beta 1 x1 plus beta 2 x2, it will become 0.741. Similarly, when we introduce third variable, R square is further increased, and we introduce fourth variable, then R square is maximum among these, that is 0.783. And you can see that R square, when we are increasing the number of variable, R square is increasing. In same manner, adjusted R square is also increasing. Sometimes if it becomes stable, then there is no requirement to increase the variables. Okay. And here you can see R square change. That means how much changes occurs in the R square. We start with y is equals to beta naught. When we introduce first variable, beta 1 x1, our model become y is equals to beta naught plus beta 1 x1. It will become from 0 to 0.707. That's why R square changes 0.707. Then we introduce beta 2 x2. Then there is an increase of 0.34 units. Okay. So in this manner, R square changes. And here, all the changes are significantly different from 0. Okay.
And in ANOVA, we consider only final one, that is for model 4. We are not bothering whether what is about first, what is about 2, what is about 3. Final model is fourth one with 4 variables. So we consider ANOVA fourth table, which indicates our model is fitted good. F change, that is F statistic, on the basis of which we calculate the p-value. Without this F change, we cannot calculate p-value. If you remember, you have studied F statistic or T statistic. Okay. From that value, we calculate the p-value. Okay. You have two rules. If calculated value comes out to be larger than tabulated, then we reject the null hypothesis. Okay. It is calculated value. You can compare it with the tabulated value. Or other concept is, if p-value comes out to be smaller than level of significance, then you reject null hypothesis. Okay, so both type of results are available, but it does not show tabulated value. You have to obtain tabulated value from the table. Okay. Then after ANOVA, we go to coefficient. Here you can see in model 1, only horsepower is included. In model 2, horsepower and length are included. In model 3, along with horsepower and length, curve weight is introduced. And in fourth model, horsepower, length, and curve weight and engine size, there are 4 variables. बता रहा हूं, don't worry. Now there is another table, excluded variable. Okay. In first, you will see that engine size is significant, wheelbase is significant, weight is significant, and length is significant. Whereas curve weight, fuel capacity, and fuel efficiency are insignificant. Okay. Among these, for which the value of T, or you can say partial correlation, is maximum, excluding the sign. Okay, excluding the sign, value of partial correlation, or you can say T statistic, is maximum, that is introduced at first. Okay, so in first model we introduce length. It has maximum value of T, ignoring the sign. Okay, then for remaining we calculate T statistic, that is length is introduced, remaining engine size, wheelbase, width, curve weight, fuel capacity, and fuel efficiency. Among these, again, maximum occurs for curve weight. So in next step, we introduce curve weight. Okay. In first model, which is insignificant, in second, that may comes out to be significant. Not necessary, it will always remain insignificant. So we have to check all the variables remaining. Similarly, in third, we introduce engine size. And then in fourth, we introduce, in third, we introduce fuel. In second, curve weight. In third, we introduce width, engine size. And in fourth, we have length. In first, length, then in second, we have used curve weight, then in third, then in fourth, there are no significant variable. We have remaining 4 variables which are insignificant. That are insignificant, that's why that are not included in the model. Okay. So your question, why other variables are not considered? So you can see in last
part of table, that is model 4. After model 4, all the variables are insignificant. Okay, so we introduce no more variable in the model. It is the one method, but there may be a chance that we exclude the important one and include the unimportant. Fuel efficiency is important for us, but if in the final model, if you see, there is no fuel efficiency. Okay, fuel capacity may also be important, but there is no fuel capacity. By changing the method, you may get same or you may get different model. It depends upon their procedure. Hmm? I am telling what? We calculate this T statistic. Okay? Among significant for which T is maximum, ignoring the sign, that is introduced first. Then for remaining, we again calculate that T statistic. Okay? Again calculate, then which have highest, that is introduced. When all the remaining variables become insignificant, we stop. Okay. There is another method which is called as backward elimination method. If you go in a method, you will get option backward. Okay. Using that, we start with full model. That is all the variables in the model. Then we remove one by one insignificant variables. Okay. Which is highly insignificant, that is removed first. Then which is in remaining, which is highly significant, that is removed at second stage. In that manner, we proceed. But in this process, some important variables may be entered or may be removed from the model. To overcome this difficulty, we use exploratory factor analysis, make the factors of the variables that are the linear combination of the variables and use that factors in the model instead of original variables. By the definition of factor analysis, the factors we obtained are uncorrelated to each other. So that are uncorrelated to each other. So problem of multicollinearity does not exist. Okay. So for exploratory factor analysis, we go to analyze. If you remember, then go to dimension reduction. There it is. Then click on factor. Okay. Take all the independent variables into the box of variables. Not consider the dependent one. Okay. Only independent variables are considered in the variable section. Take them on the variables box. Then click on descriptive. Select Yemo-Bartlett's test. Then click on continue. Among extraction, click on scree plot. And then click on continue. Among rotation, use Varimax. Then continue. Scores, save as variable. By default, it takes regression. We are not changing it. Then click on continue. Extraction में scree plot. Then continue. In rotation, use Varimax. In scores, click on save as variable, then regression, then continue. You can change that.
number of iterations means it performs repeated steps. Okay. Yes. Sometimes we calculate eigenvalues and eigenvectors. In some case, you can factorize the characteristic equation. You write determinant of a minus lambda is equals to 0. You will get an equation in variable. It will have 20. If you are using 9, it is have maximum power lambda to the power 9. You have to factorize it 9 times. Sometimes it comes out to be easily factorized, but sometimes you cannot factorize it easily. In that situation, it use iterative procedure. That is, same procedure is repeated a number of times. So how much number of times you want to repeat, that is maximum iteration. Okay. You can change it. How much you increase it, it will take much time. Okay. Then click on OK. Sorry, it's one option, I think. And there is an option, okay, that was sort by size. I am again repeating, go to factor analysis, put all the independent variables in the box of variables. In descriptive, click on KMO-Bartlett test for sphericity. Go to extraction, click on scree-plot, and you can use the criteria based on eigenvalues. You can use scree-plot, and there is a third option, fixed number of factors. I am considering fixed number of factors, and I am generating 3 factors. Okay. I have practiced a number of time on this data set, so I know that 3 factors will be sufficient. Okay. So I am generating 3 factors. Then go to rotation, click on Varimax, then continue. Go to scores, click on save as variable, then on regression, then continue. And among options, click on sort by size, then continue, then OK. So if you see that in the total variance explained, the variation among the independent variables, 89% can be explained with the help of factors. And scree-plot also suggests that there are 3 factors you can generate. You can generate 2 only, you can generate 4, or you can generate 3. The point from which scree-plot become parallel to x-axis, that is considered as cutoff point. Okay. So from here you can take it is become parallel to x-axis. So you can generate 3 or you can generate 4 factors. Now we come to rotated component matrix. Here you can see that length, wheelbase, and width are in factor 1. Fuel capacity, fuel efficiency, and curve weight are in second. Horsepower and engine size are in third. Okay. Rotated component matrix. Okay. There are maximum value in first for length, wheelbase, and weight as compared to other for factor 2 and factor 3. So you can say that length, wheelbase, and width belong to factor 1. So you can say it defines the structure of the vehicle or size of the vehicle.
These three are defining. Okay. How कार आपकी कितनी लंबी है, कार कितनी चौड़ी है, उसके टायर का साइज कितना है, that is structure of the vehicle. First factor is contributing structure of the vehicle. Second is fuel capacity, fuel efficiency, and curve weight. So how much fuel is required? You can say that fuel, you can name second as fuel. Okay. आप कितना तेल उसमें स्टोर कर सकते हैं, कितना उसका साइज है, और कितनी आपकी गाड़ी की इफिशियंसी है. सो फ्यूल रिलेटेड थिंग्स आर इन सेकेंड फैक्टर. इन थर्ड फैक्टर हॉर्स पावर एंड इंजन साइज. दैट इज it is defining the engine of the vehicle. So you can name it as engine of the vehicle. So here I am changing the name. Factor 1 as structure vehicle. Second one is your fuel, and third is related to engine. Okay. So three factors were generated. I am giving name structure vehicle, fuel, and engine. Now we perform regression on these three as independent variables. Go to regression, then go to linear. Okay. There is a button reset. Click on that. Okay. When you click on reset, all the entries by default you have made earlier will be removed. Now take price in thousand as dependent and three new variables, that is reset. After going to reset, after going to regression, go to you have considered a option save factor scores as regression. Using that option, these three variables are included in the your data sheet. Okay. वो बैकहैंड पे कैलकुलेशंस होते हैं. On the basis of that, regression scores are calculated for each factor. Okay. On using that, you are getting. आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर आया है, on that behalf I am explaining that. Okay. It is your component matrix. Okay. You can write structure of first variable, first factor as okay. You can write first factor as F. Okay. Okay. Nothing to bother. You can write it as factor 1 is equals to 0.909 times length plus
0.880 times wheelbase plus 0.677 times weight plus so on up to last variable. And putting these values in the value of these variables, you will get regression scores. Okay. तीन डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी, वन फॉर फैक्टर 1, सेकंड फॉर फैक्टर 2, थर्ड फॉर फैक्टर 3, and putting the value of variables you will get these scores. Okay, now in regression put price in thousand in dependent and 3 factors generated as independent. Okay, then click on OK. Method intervention. So you can see that R square using that factors R square is somehow reduced. Earlier it was 78%, now it becomes 65%. But in the model, two are significant. That is regression score 2, that was fuel, and third one was engine. That comes out to be significant. Okay. So in this manner, we can overcome from the problem of multicollinearity. If you want to check whether multicollinearity exists, you can go to correlate, bivariate, put all these 3 variables into the variable box, and then click on OK. Then you can see that the correlation among any pair of variables is 0. Okay? That is, factors are uncorrelated. So I think it is sufficient for today. That the importance of this topic across various domains. But just to start, I am all of us are familiar with that. The problem in front of the problem is that we have to know the people's right. So it is a very known. Hello. Am I audible? Online participants? Online participants? Yes, thank you. So, right. So I am taking a very simple example. Suppose we want to study investment behavior. Right? So this so after a बताएगा फॉर एक पर्टिकुलर को आवाज नहीं आ रही देखो हेलो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स नहीं 3 लोगों ने बोला कि दैट ऑडियो इज ब्रेकिंग एंड ओके so there are
Actually, after that, we have plotted them. Okay. Hello. Okay. So just check once more whether the voice is clear now or not. Online participant. Okay. Right. Um, the mic that I have put in my pocket. Okay. Right. Right. The problem क्या है? So it's such. Is it okay? वॉइस चेक करो तुम लोग एक बार. स्कोर ऊपर कर ले. हेलो. Okay, so I am teaching again. If you people have some issue, then again indicate. Okay. So we have plotted these samples, right? These are the values that has been plotted. Suppose this is, we are putting some name to them. Suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9. So we have a sample of 9 people, and these 9 people have been plotted on this graph. So when you look at this diagram, what is the first thing that you observe? Yes, anyone? Online or offline? There are two groups. Just stay. So there are two groups. Let this is the first group. Let it be the second group. Suppose we put this as the first group, and this is the second group. So when you said there are two groups, so why you have said there are two groups? So the answer may be that 1, 2, 3, 6 lies in a proximity, right? In the same way, 4, 5, 8, 9, 7 is 9. So we put a name that these are the such groups who are displaying compact. So this first group is a compact group. The second group is okay. So group. So they are
क्या प्रॉब्लम है? हेलो, तो इसको हम हाथ में लेके बोल लेते हैं ना. जस्ट अ मोमेंट. इस पे आवाज आ रही है? कनेक्ट पहले हम देखें पहले. हेलो, am I audible? Online participant? दूसरे को दिखा. एक तो लगा होता एक वक्त में ठीक है. Okay, so we have observed that there are two things in these groups. One is compactness, other is separation. Is that okay? Right. So let me ask. So if we have to define these two groups, so you are defining these two groups in a manner that these two groups are showing compactness and as well as they are showing separation among themselves. So let us discuss a bit of statistics. So if we say compactness, so compactness is actually how it can be measured. How we can say that 1, 2, 3, 6 are showing compactness. Variability kam hogi means they are showing minimum heterogeneity, right? Or they are showing maximum homogeneity, isn't it? And when you say maximum homogeneity, you can say that they have maximum or high internal homogeneity. Is that okay? Now, if we talk about the separation, as you see, this group as a whole is different from this group, isn't it? So you can say that they show maximum external heterogeneity, isn't it? Okay, right? So accordingly, we define this type of groups. These are the such groups which are compact. Compact means they have high internal homogeneity as well as they are showing separation. Separation means they are having high external heterogeneity also. So these type of groups are primarily known as clusters. Is that okay? They are primarily known as clusters. Fine. So up to this stage, we have up to this point we have covered two stages.
I will be coming back to this and we will be discussing again. Now, after creating such groups, obviously you want to define, you want to put some name for group 1 and group 2, isn't it? तो group 1 का क्या नाम रख सकते हैं? Group 1 consists of such investors who are preferring, yes, low return as well as low risk, right? So the first group can be put as risk aversion group, isn't it? Right? Means it consists of such a people who are showing low risk capacity as well as they don't want high return. And the second group is related to those customers, those investors that are risk taker, right? I am using the name that normally the finance people use, isn't it? Right? So this is all about cluster analysis. Is that okay? So what we have done up to this stage, the first thing is you have identified these two variables, right? ये दोनों variables कहाँ से आए? Obviously it should be from some literature review, right? आपके experience survey से आए होंगे कि नहीं आए होंगे, right? Means there should be a thorough work so to decide on the basis of which we are creating clusters. So they are known as clustering variables. Is that okay? Right? They are known as clustering variables. Second, you have created the clusters. So the second stage is related to creation of clusters. Is that okay? And what is the third stage? Third stage is related to profiling of clusters. Is that okay? Right. Now let us discuss the question that Dr. Sanjay has posed. Yesterday also you people have covered a grouping of something. ठीक? किस चीज की grouping थी वो? Grouping of variables. Or in the language of analytics, we can say that was a grouping of features. तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सी टेक्निक यूज की थी? फैक्टर्स यूज किए थे. And those groups are known as factors or the dimensions. Is that okay? यहां हम लोग जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, हम लोग ग्रुपिंग किस चीज की कर रहे हैं? हम लोग ग्रुपिंग किस चीज के कर रहे हैं? रेस्पोंडेंट्स की कर रहे हैं, यूनिट्स की कर रहे हैं, केसेस की कर रहे हैं, क्या यूनिट्स की कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ रेस्पोंडेंट. इज दैट ओके? फाइन. अब एक क्वेश्चन हम और पूछेंगे. वी हैव पुट केस और रेस्पोंडेंट नंबर 1, respondent number 2, respondent number 3 in one group, but respondent number 1 and 4 are in different. ऐसा हमने क्यों किया? बताइए. 1 and 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमको उनकी प्रॉक्सिमिटी दिखाई दे रही है. अभी अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं. हमको उनमें क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉक्सिमिटी है. डेट 1, 2, 3, 6 are in close proximity. इसी तरह 4, 5, 7, 8, 9 are in close proximity. Is that okay? ठीक. फिर हम लोगों ने 1 and 4 को अलग ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि वहां पे प्रॉक्सिमिटी नहीं है. There is a big gap. Okay? या हम कह सकते हैं there is a separation. Is that okay? Right? So this is just by the observation. Now we have to decide some objective measure. So to decide how we are going to measure proximity or the separation, right? So क्योंकि कल आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया था, तो someone has said we may use distance. ठीक. हम लोग अपने रियल लाइफ में तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि हमारा फ्रेंड या कोई भी स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड दूर चला गया तो हम लोग में डिस्टेंस बढ़ गया. डिस्टेंस बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी कम होती है और सेपरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, राइट? सो देयर इज ए मेजर हम डिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं. कोई और मेजर? समथिंग एल्स? क्योंकि कल आप लोगों ने डिस्टेंस सुन लिया था. नहीं सुना होता तो सबसे पहले यही क्वेश्चन.
कोई और मेजर अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस कैसे हम मेजर कर सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी या सेपरेशन? नहीं, कोई मेजर नहीं पता ही, इतनी स्टैटिस्टिक्स सबको आती है। कैन वी यूज कोरिलेशन? Right? We can use correlation also, right? So correlation can also be used in order to measure proximity or the separation. Right? Now the question arises, आप लोगों ने कल जो EFA करा था उसमें क्या यूज किया गया था? कोरिलेशन या कोवेरियंस यूज किया गया, ठीक? माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स, क्या हम लोग को कोरिलेशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इफ नो, व्हाई? हम लोग कर सकते हैं, बट कैन कोरिलेशन बी अ गुड मेजर सो टू फाइंड आउट प्रॉक्सिमिटी और सेपरेशन? क्यों? बिकॉज कोरिलेशन मेजर्स द पैटर्न, राइट? और यहां हम लोग पैटर्न नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडीइंग मैग्नीट्यूड. इज दैट ओके? सो वी कैन यूज कोरिलेशन, डेफिनेटली वी कैन यूज कोरिलेशन, but always distance is the preferred measure because it is measuring the magnitude, not the pattern. Okay? EFA में हम लोग ने क्या करा था? We are studying the pattern. Is that okay? Right. So whatever we have discussed, now I am formally introducing this concept. Right? What is the basic difference between regression, logistic regression on one side and EFA and cluster analysis on the other side? हम लोग जब भी बात करते हैं रिग्रेशन की या लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है? डायरेक्टेड एरोज होते हैं. वी नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम एक्स और ये डायरेक्टेड किस तरफ होता है? वाई की तरफ होता है, राइट? यहाँ पे या ईएफए में जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि रिस्क इज गवर्निंग द रिटर्न और रिटर्न इज गवर्निंग द रिस्क. हम लोग दोनों का मिक्स यूज कर रहे हैं, right? So this type of relationship is known as interdependence relationship. Is that okay? Fine. Second thing, जैसा कि हम लोग ने यहाँ variables define करे हैं, we are taking x1 as return, x2 as risk. ठीक? हम इसको interchange भी कर सकते हैं, doesn't matter. ठीक? Means there is no y. No y means there is no label data. So in the language of analytics, we call this technique as unsupervised learning. Why unsupervised learning? Because there is no y, there is no labeling. Okay? यहाँ तक क्लियर? लेकिन ऐसा आप रिग्रेशन में नहीं कर सकते हैं. अगर x है तो that will be the explanatory variable, y क्या होगा? That is the target variable. आप चेंज नहीं कर सकते, right? So this is known as unsupervised learning. It is interdependence technique. Objective क्या होता है? So to classify objects, unit, cases into homogeneous groups, right? किस तरह के homogeneous group होंगे? That shows maximum within cluster homogeneity and maximum between cluster heterogeneity, right? किसके basis पे किया जाता है? Clustering variables. Obviously, if we change the variable, then the measures or the proximity and or the separation may change. Is that okay? Clear? So these are the different names as per the different domain that we use. कुछ जगह हम लोग क्यू एनालिसिस बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन एनालिसिस, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. These are the different names that can also be used for cluster analysis. तो इसको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए. Now, very important thing is it is a heuristic technique. Any idea किस टाइप की टेक्निक्स को हम लोग ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स बोलते हैं? What is the basic difference between statistical techniques and the heuristic techniques? वो तो बहुत दूर की चीज हो गई. अच्छा ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा जनरलाइज करें. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन थ्योरम्स, रूल्स, इन सब पे बेस्ड होते हैं. ह्यूरिस्टिक इज बेसिकली बेस्ड अपॉन प्रैक्टिसेस. कोई चीज बार बार अगर रिपीट की जाती है तो दैट बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जैसा कि उन्होंने बोला दैट कम्स फ्रॉम आवर हार्ट. तो आपके हार्ट में कोई चीजें कैसे आती है? आपके साथ होती रहती है, धीरे धीरे आप क्या करते हैं? उसको एक एज ए बिहेवियर ले लेते. इज दैट ओके?
So this is a heuristic technique. This is a descriptive technique, are theoretical and non-inferential. So it poses a big challenge. Why it poses a big challenge? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट उसमें देखा था या भी आप लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस करा था कि इतना वीआईएफ होगा या वीआईएफ हाई है तो वी कैन कंसीडर दैट इज ए मल्टीकोलरिटी केस। यहाँ पे क्योंकि चीजें डिसाइड रिसर्चर को करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस टेक्निक, सो दिस इज ए बिग चैलेंज फॉर अ रिसर्चर। मतलब देयर इज नो सपोर्ट इन द थ्योरेटिकल सपोर्ट और द एल्गोरिथम सपोर्ट जो आपको मिल पाए। So that's why we always say, very important statement, that cluster analysis as well as the factor analysis are as much arts as science. Okay, so lot of subjectivity, lot of decision is there on the part of the researcher, right? Means there is no absolute truth जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. So since there is no absolute truth, so there are some big challenges. चलिए, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको हमने पहले ही बता दिया, रिलेटेड टू फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस. नाउ we basically consider in this class two type of clustering. The first one is the hierarchical clustering. Hierarchical clustering means there is a hierarchy structure. एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है, आपने ट्री देखा होगा. ट्री में देयर इज ए हायरार्की, बीच में क्या होता है, ट्रंक होता है, देन वी हैव बिग ब्रांचेस, देन वी हैव स्मॉल ब्रांचेस, कहां तक चले जाते हैं, you move up to the leaf. So there is a hierarchical clustering. Another type of clustering is the partition based clustering. जैसे partition based कैसे हो सकता है, there is a one group and there is a two groups. अगर थोड़ा सा आप लोग गलत तरीके से बैठे होते तो हो सकता है कि सभी बॉयज इधर बैठते, सभी गर्ल्स इधर बैठते, तो उसको हम कह सकते थे there is a partition type of grouping, isn't it? Right? So that is known as partition based clustering. एक और टेक्निक आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, दैट इज फॉर द स्पेशल डेटा, दैट इज नोन एज डीबी स्कैन, दैट वी आर नॉट कवरिंग थ्रू दिस, क्योंकि एसपीएसएस के थ्रू इट इज नॉट पॉसिबल. इज दैट ओके? सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस कंसीडर द केस दैट आई हैव शेयर्ड विद. सो दिस इज द केस, केस आपके पास है, ओके, एंड दिस इज द डेटा सेट. सॉरी, दिस इज द डेटा सेट जो आपके पास है, इसी को हम यूज करेंगे. इसको एक बार रीड करिए एंड वी विल बी डिस्कसिंग. वेरी सिंपल केस, वेरी सिंपल केस. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? That we want to segment the clusters, segment the consumers on the basis of their shopping attitude. Segment का मतलब क्या होता है? A group that behaves in a similar manner, right? And that may be different from others. हम लोग इस टाइप की लैंग्वेज कर रहे हैं, तुम लोगों ने तो सेगमेंटेशन कर रखा, तुम लोग तो एक ही तरह की तरह बिहेव कर रहे हो, राइट? सो हमको ये करना है, और ये जो सेगमेंटेशन करना है ये किसका करना है? consumers का. Consumers are the object, consumer are the cases. On the basis of what variable? On the basis of their attitudes towards shopping. ठीक? अब attitude towards shopping is a construct. तो उस construct को हमको थोड़ा define करना पड़ा. हम कैसे define कर रहे हैं? We are defining attitudes towards shopping using this 6 statements. पहला स्टेटमेंट, शॉपिंग इज फन, शॉपिंग इज बैड फॉर योर बजट, आई कंबाइन शॉपिंग विद ईटिंग आउट, आई ट्राई टू गेट बेस्ट बाय, आई डोंट केयर अबाउट द शॉपिंग, यू कैन सेव अ लॉट बाय कंपेयरिंग प्राइसेस. इज दैट ओके? सो देयर आर द मिक्स ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्टेट, राइट? और शॉपर से क्या कहा गया? टू एक्सप्रेस देयर डिग्री ऑफ एग्रीमेंट. ठीक, हम लोगों ने पॉजिटिव वर्डेड इसके रखा है. 1 मतलब डिसएग्री, 7 का मतलब क्या हो गया? एग्री. लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई रेस्पोंडेंट पहले वेरिएबल पे 1 दे रहा है और दूसरे वेरिएबल पे 1 दे रहा है, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा? अपोजिट होगा, राइट? बिकॉज फर्स्ट वन इज ए पॉजिटिव वर्डेड स्टेटमेंट, सेकंड वन इज ए नेगेटिव वर्डेड.
So if someone is putting 1 for the variable 2, इसका मतलब he doesn't consider or she doesn't consider shopping is bad for your person. Okay, ये आपको याद रहेगा. तो this is a very simple case और हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 20 ही रखी है क्योंकि बिकॉज जस्ट टू शो द थिंग्स कि कैसे वर्क कर रहे हैं. This case is being taken from a very good, very famous book. That is a marketing research by नरेश मल्होत्रा एंड सत्यभूषण दास. पीएसएल पब्लिकेशन की बुक है, उसमें आपको ये केस मिल जाएगा. फाइन. सो दिस इज द केस. So before moving forward, let us consider the case. Let us consider the data. Then we will be coming back to discuss the various concepts. Right. So this is our data set. Okay. This is our data set. आपके पास होगा. So these are the 6 variables, and and here the scale is there where 1 is showing disagreement and 7 is showing agreement. And this is the data. Okay. Is that okay? Now we will be discussing this scenario as per the concepts. So let us go back to the theory part again. Right? What research question we have discussed. Next is selection of the clustering variable. This we have also discussed. Is that okay? Right. Next is related to the sample size. Obviously, all these techniques require a big sample. What is the problem with the small sample? Let us consider this situation again. Okay, so this is the case. Now, let us take one more. Suppose this is sample number or case number 10. Is that okay? Or this is case number 11. Fine. Now, first, my question is, can we consider case number 10 and case number 11 as an outlier? इसको हम आउटलायर ले सकते हैं. अब देखिए जो हमारा वेरिएबल जो रिटर्न है उसकी रेंज क्या है. ये रेंज है, isn't it? ये जो केस नंबर 10, 11 इस रेंज में आ रहा है. ओके. इसी तरह इफ वी कंसीडर द अनदर वेरिएबल दैट इज रिस्क, ये इसकी रेंज है. ठीक ठाक स्प्रेड है. और अगेन केस नंबर 10 and केस नंबर 11 आर कमिंग इन दिस रेंज. राइट. So if you consider case number 10 and 11 as a univariate case, तो क्या इनको हम outliers कह सकते हैं? 10 and 11 is not an outlier with respect to return, separately with respect to risk also. लेकिन अगर हम इस क्लस्टरिंग को देख रहे हैं तो आप देख नहीं रहे हैं कि केस नंबर 10 and 11 का बिहेवियर बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है. राइट. सो इट इज एन आउटलायर विद रिस्पेक्ट टू क्लस्टरिंग. है कि नहीं है? Now issue arises since we have a sample of just 11 observation. Issue arises कि ये जो 10 and 11 है, they are the real outliers or they are the part of a small group. अगर आप लोगों ने इंट्रोपी सुना होगा तो this is the example of entropy. Next physics में भी पढ़ाते, कई जगह हम लोग पढ़ाते हैं. Anyway, so this is a big question. We can't answer कि 10 and 11 are forming a group or 10 and 11 are actually the outliers. Actually 10 and 11 are forming a group. कुछ लोग रैशनल इन्वेस्टर भी तो होते हैं. रैशनल इन्वेस्टर किसको कहा जाता है? एनीवन फ्रॉम जो ना तो हाई रिस्क के लिए पीछे जाते हैं और ना ही हाई रिटर्न के पीछे जाते हैं. उनका जो स्टैंड होता है वो इन बिटवीन दीज टू होता है. राइट. सो एक्चुअली 10 and 11 बिलोंग्स टू दैट क्लस्टर. लेकिन यहाँ पे इशू क्या हुआ? बिकॉज वी हैव ए स्मॉल सैम्पल. So हमको लग रहा है कि 10 and 11 are the outliers with respect to the cluster analysis. साथ में हमको ये भी लग रहा है they may form a different. Right? So it is happening just because of the thing that we are having a small sample. Right? So this is the situation जो हमने यहाँ लिखा भी. It differentiate between outliers and the small group. Okay? ठीक. प्रॉब्लम क्या होती है आउटलायर्स के साथ?
कि ये ग्रुप की सिमेट्रिसिटी डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि अगर एक यूनिट, मान लीजिए आपने एक ग्रुप ऐसा बनाया, राइट, आपने एक क्लस्टर ऐसे बनाया, तो ऑब्वियसली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी कि नहीं? किसकी वजह से हो जाएगी, राइट? सो इसलिए कंसिडरेशन ऑफ आउटलायर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन, फाइन। एंड इट इज नॉट दैट इजी टू आइडेंटिफाई कि हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। द फर्स्ट टू मेथड्स जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों में देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग द आउटलायर्स। दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द आउटलायर्स। डीबी स्कैन इज अ बेटर मेथड सो टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स, लेकिन वो डीबी स्कैन एसपीएसएस से नहीं कर पाएंगे। बट यू शुड नो that what are the drawbacks of the method that you are going to employ. Is that okay? Right. So how we measure the similarity? Similarity means how we measure the proximity. There are two approaches जो हम लोगों ने discuss किया था. One is the correlation approach, other is the distance approach. Correlation approach is not that much used because our emphasis is on the magnitude. Fine. अब हमको डिस्टेंस मेजर करनी होती है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक डिस्टेंस पढ़ाई गई होगी। क्या डिस्टेंस पढ़ाई गई थी? अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालते थे? इस तरह से निकालते थे, राइट? इफ वी हैव 3 डायमेंशंस तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाते थे। दैट इज नोन एज यूक्लिडियन डिस्टेंस। जैसे एट प्रेजेंट दिस इज ए 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन डिस्टेंस। अगर 3 होंगे तो क्या हो जाएंगे? दैट इज ए 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन डिस्टेंस। लाइक इन दिस एग्जांपल वी हैव 2 डायमेंशंस, तो जो भी हम डिस्टेंस निकालेंगे दैट विल बी 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन डिस्टेंस। आपको जो केस दिया उसमें कितना निकालेंगे? हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर? 6. So we will be calculating 6-dimensional Euclidean distance. Is that okay? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, then that distance is known as squared Euclidean distance. Is that okay? Fine. Right. Now, instead of distance, if we consider now instead of the squared distance, if we consider the modulus distance, that is known as Manhattan distance or city block distance. Is that okay? Fine. Right. There are other distances also like the Sebestyal's distance, which consider only the maximum of these distances. And Minkowski distance is a generalized distance. देखिए आपको यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा? आपको फॉर्मूला नीचे दिख रहा है और I am writing it here. This is x2 minus x1, ओके, टू द पावर p, और इसका हम लोग ने ओवरऑल क्या रूट ले लिया? 1/p, राइट? इफ वी पुट p इक्वल्स टू 1, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? बोलिए, मैनहट्टन डिस्टेंस के इक्विवेलेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इफ वी पुट p इक्वल्स टू 1, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट? एंड इफ वी पुट p इक्वल्स टू 2, it will be equivalent to Euclidean distance, right? So it can take any value, p is equal to 2, p is equal to 3, and so on. Fine, right? So these are the various distances. What is the reason of discussing so many distances? Anyone? As a researcher या as an analyst, इतनी सारी distances क्यों दे रखी गई? Because in different situation, different distances may be more appropriate as compared to other. Fine. And there is no method to examine which this type of distance would be best in a particular situation. So for a researcher, what is the challenge? For a researcher, the challenge is that researcher has to try the different distances, and accordingly he or she has to decide which distance gives us the best result. Right? So these are the challenges of any heuristic. ये आपको bear करना पड़ेगा, और हम आपसे ये कह नहीं रहे हैं कि this is the best distance, यही यूज करें. Obviously, for an example, I will be using only one distance. ठीक?
इसमें जो हम डिस्टेंस यूज करेंगे दैट विल बी द स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस। वाई स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस? हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बचेगी। नंबर 2, इट एम्फेसाइज द डिफरेंसेस। स्क्वायर करने से जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाईलाइट हो जाते हैं। से नॉर्मल में अगर 1 and 2 है आपको स्मॉल डिस्टेंस दिख रहा है, या 1 and 10 है आपको स्मॉल डिस्टेंस दिख रहा है, स्क्वायर कर देंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 and 100, right? But this is not the best in all the situations, but we will be using squared equilibrium distance. Is that okay? Now the next challenge in this case is, since we are considering distance, suppose हमारे 3 variables है v1, v2, v3. v1 is on a scale of 0 to 5, v2 is on a scale of 0 to 10, v3 is on a scale of 0 to 100. Okay, right? तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कौन सा वेरिएबल डोमिनेट करने लग जाए? v3 will dominate, right? Why v3 will dominate? Just because of the scale that is being considered. So हमको इसको कंट्रोल में लाना है, हमको ये नहीं लेना है कि because the scale there will be an overemphasis on a variable. So what is to be done? We have to put them on the same scale. There are 2 methods. One is स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं? मीन से माइनस कर देते हैं और एसडी से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, राइट? सो प्राइमरली जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो किसके बीच में आ जाएंगे? 99.73% ऑब्जर्वेशन किसके बीच में आ जाएंगे? प्लस माइनस 3 के बीच। देयर इज वन मोर मेथड दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हाउ वी डू? हम लोग मिनिमम से माइनस कर देते हैं और रेंज से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। इज दैट ओके? राइट? अगेन इन सम सिचुएशन स्टैंडर्डाइजेशन इज अ गुड थिंग। ठीक, जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं देन इट वुड बी कन्वर्टेड टू 0 to 1। ठीक, सो इसमें नॉर्मली प्रैक्टिस क्या यूज करते हैं? जैसे अगर नॉर्मेलिटी दे रखी डेटा में देन वी मे प्रेफर स्टैंडर्डाइजेशन, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन दैट इट कैन नॉट हैंडल द आउटलायर्स। ओके, सो अगर हमारे डेटा में आउटलायर्स है देन वी प्रेफर नॉर्मलाइजेशन। फाइन, आपको ये सब एसपीएसएस में मिल जाएगा, राइट? बट इफ द वेरिएबल्स आर ऑन द डिफरेंट स्केल वी कैन यूज normalization. There are other type of distance measure also जो हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे, SPSS में अवेलेबल नहीं है, that is Mahalanobis distance. Statistics वाले सब लोग जानते हैं। The good thing with Mahalanobis is it consider variance or covariance matrix, right? So it is a good thing that it takes care of correlation also. बाकी ये नहीं करता, लेकिन इसको हम लोग नहीं कंसीडर करते। These 2 methods like the Jacquard distance, it is used for some qualitative data, जहां पे हमारे आंसर्स किस फॉर्म में आते हैं? बाइनरी फॉर्म में आते हैं, यस या नो के फॉर्म में। इज दैट ओके? तो यस का मतलब है प्रॉक्सिमिटी है, नो का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमिटी। दोनों लोग यस कह रहे हैं तो प्रॉक्सिमिटी है, दोनों लोग नो कह रहे हैं तो प्रॉक्सिमिटी। एक यस कह रहा है एक दूसरा नो कह रहा है तो प्रॉक्सिमिटी नहीं। इज दैट ओके? इन द सेम वे वी मे कंसीडर, मान लीजिए ये 2 केसेस है, हम इनके बीच का क्या निकाल सकते हैं? cos theta, right? So cos theta is also a measure for proximity, right? So क्योंकि ये आपको जब हम नोट्स जब बनाए थे, इट इज नॉट ओनली फॉर एसपीएसएस, राइट? In different software, the different distances may be there. So just you should be aware that there are a number of distances that can also be considered. Fine? Okay. तो ये उनका ग्राफ जो उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, जैसे इक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं, दिस इज जैकार्ड डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस में अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज मिन्स्कोव्स्की डिस्टेंस। सेबेस्ट्रियस क्या होता है? इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू किधर पे आ रही है? ये आ रही है, तो इट कंसीडर द सेबेस्ट्रियस। मिन्स्कोव्स्की इज अ जनरलाइज्ड डिस्टेंस। आपको यहाँ पे डिस्टेंसेस दे रखे हैं, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट डिस्टेंसेस मेजर दैट कैन, आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको ऑलरेडी एक लिंक दे रखा गया। फाइन, ओके।
So this is the thing. Now, this is a very common problem where we require standardization with respect to the variable. ठीक? अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 4, 5, 6. These are the certain variables V1, V2, V3, V4, V5, V6. Okay. Now the scores are, suppose on a scale of 1 to 7. This is 6, this is 3, this is 2, this is 6, this is 1, this is 4. Okay. Now, for 2, the scores are this. Right? In the same way, for 3, we have 6, this is 1, this is 4, this is 7, this is 3. For 4, we have scores like this. Right? So what is the problem with case number 2 and case number 4? आपको दिख रहा है? 7, जो केस नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? हर को 7 दे रहा है, मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा शो कर रहा है, सबसे खुश दिख रहा है. और केस नंबर 4 के साथ प्रॉब्लम क्या है? राइट. सो दिस केस नंबर 2 इज नोन एज येस एयर, हर चीज को अच्छा कहते हैं. राइट. और केस नंबर 4 कैसा है? दे आर द नेसेयर, हर चीज को क्या कहेंगे? नो कहेंगे. अब नाउ इफ वी यूज दिस डेटा for the distance measure, obviously they will have some implication for the analysis. So हमको in many of the situation we have standardized for them also, right? Variables का standardization कैसे किया गया था? With respect to column mean और column SD से किया गया था. यहाँ पे हमको कैसे करना पड़ेगा? We have to use row centric standardization. Is that okay? Clear है सबको? Right? So this may be problem. कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ऐसी प्रॉब्लम मिले, but in some particular situation this type of problem will be there. Specifically यहाँ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, right? In case of many psychological problem इस टाइप के आते हैं, क्योंकि वहां पे जो पीपल क्या होते हैं, अपने आप को एक अलग तरह का शो करने की कोशिश करते हैं. राइट. तो या तो सबको यस बोल देंगे या सबको क्या करेंगे? नो बोल देंगे. So this type of problems in that domain also. So this is the thing. Okay. Related to assumption, this is a heuristic technique. It does not require any strong assumptions. The only thing is multicolority should not be there. Otherwise, the collinear variables will have more weightage as compared to the other. Fine. Right. So these are the background that we are discussing. Now we will primarily be discussing these two types of clustering. One is the hierarchical clustering, other is the non-hierarchical clustering. So let me explain the concept. We are discussing the hierarchical clustering. Okay. Now, suppose we have, how many cases are there? We have 9 cases are there, right? So these are the 9 cases that with the star. So this stage is known as 0th stage. Okay, and we have 9 separate cases. So for the time being, we consider these 9 separate cases as clusters. Is that okay? So now I am discussing the first stage, how the clustering is being performed and how and what do we mean by hierarchical clustering. So these are the 9 cases. Now we calculate distance between all these things. So for that we consider a distance matrix. ठीक, distance matrix क्या होगी? 1, 2, 3 से 9 तक. In the same way 1, 2, 3 से 9 तक. And we calculate the distance in between them. Obviously the diagonal elements would be 0, right? And the distance between 1 and 2 and the distance between 2 and 1 would be the same thing, right? So हम लोग या तो अपर ट्रायंगुलर ले लेते हैं या लोअर ट्रायंगुलर ले लेते हैं. फाइन, आपको करना नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, ये सब इसमें हो जाएगा. बट व्हाट इज द ब्लैक बॉक्स डूइंग दिस आई एम एक्सप्लेनिंग. हाँ, अगर हम लोग इसको साइकिट लर्न से या पाइथन के थ्रू करेंगे देन वी हैव टू इंस्ट्रक्ट कि हमको करना क्या है, राइट?
So we calculate the distance and we merge the two closest cases. Yeah, two closest ungrouped clusters. So next stage पे कितने हो गए? ये दो एक ग्रुप में हो गए, ठीक? So how many clusters are remaining? 8 clusters, and this is known as first stage. Is that okay? In the next stage, there will be 3. So there will be 7 clusters, and this is known as second stage. End में क्या हो जाएगा? All these 9 cases are being put in a big cluster, right? So we will be having one cluster, and it would be the 8th stage. Is that okay? Right? There will be 8th stage, and in the 8th stage, everything is being clubbed into one, right? So this approach is known as agglomeration. ठीक? हम लोग जब आइस का नहीं, स्नो का गोला बनाते हैं, स्नो बॉल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? शुरू में थोड़ी सी स्नो रखते हुए धीरे धीरे उसको क्या करते जाते हैं? So that is known as agglomeration. Is that okay? It is also known as bottom to top approach. सब लोग अलग अलग हैं, बात पे सब लोग क्या आ गए? एक साथ आ गए. This is known as bottom to top approach. सबको क्लियर है? Right? So this is one approach. एक दूसरी अप्रोच भी होती है, that is opposite to this. उसमें हम लोग क्या करते हैं? We start with a big group. उसको हम लोग क्या करते चले जाते हैं? Divide. That is known as divisive approach. Okay? And this is known as top to bottom approach. So these are the two approaches that can be employed. हम लोग एक ही अप्रोच यूज करें. फिलोसफिकली आपको कौन सी अप्रोच क्लस्टर एनालिसिस के क्लोज लग रही है? फिलोसफिकली क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग. तो एग्लोमेरेशन आपको क्लोज लग रहा है क्या डिवाइसिव? राइट? सो वी विल बी यूजिंग एग्लोमेरेशन. इज दैट ओके? राइट? So these are the two approaches that can be used, and here we will be using agglomeration. Fine? Clear hai? Now, one more question arises. यहां तक तो ठीक था कि all cases are separate. तो ये तो अनग्रुप का केस था. लेकिन जैसे ही हम इस स्टेज के आगे बढ़े हैं, सिचुएशन क्या हो गई है? We have a combination of grouped clusters. Group cluster में they are having more than one unit, right? As well as we have ungrouped clusters, right? Suppose इसमें केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को आपने ग्रुप कर दिया. तो अब सिचुएशन क्या है? There is a cluster that is a group cluster which consists of case number 3 and case number 4. बाकी जैसे ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 7 है, they are the ungrouped clusters. So now the problem is कि हम उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें? Is that okay? So for that purpose we will be using one more concept that is known as linkage. Right? हम लोग linkages डिस्कस करने जा रहे हैं. Just a moment. Right? Suppose we are considering a generic situation. ये कोई दो क्लस्टर्स है. सपोज दिस इज क्लस्टर नंबर, इसका नाम क्या दे? क्लस्टर 1 दे रहे हैं, क्लस्टर 2 दे रहे हैं. राइट? क्लस्टर 1 कंसिस्ट ऑफ केसेस 1, 2, 3 and it consists of 4, 5, 6. दोनों में 3 केसेस है. नाउ
we have to consider whether we should merge cluster number 1 and cluster number 2 or not. So we have to calculate some measure of proximity in between, right? So हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं? We can calculate distance between 1 and 4. We can calculate distance, Euclidean distance between 1 and 4. कर सकते हैं? अब ये 1 and 4 किस तरह के पॉइंट्स हैं with respect to 1 and 4? सबसे पास पास है कि नहीं है, right? This approach is known as single linkage. इसको हम क्या कह सकते हैं? Single linkage. And it is also known as closest neighbor और nearest neighbor. कह सकते हैं इनको कि नहीं कह सकते? Is that okay? Right? क्योंकि because case number 1 and case number 4 are very close with respect to each other. Right? So this is known as single linkage or nearest neighbor. Fine? किसी और केस में हम डिस्टेंस किसके बीच में निकाल सकते हैं? बिटवीन केस नंबर 2 and case number 6. Okay? That is known as complete linkage. So दूसरी अप्रोच क्या हो गई? कंप्लीट लिंकेज. ये किस तरह के पॉइंट्स हैं? This is known as farthest neighbor. Okay. अब जो पहली अप्रोच है सिंगल लिंकेज, उसका मेरिट क्या है? कैलकुलेशंस कम होगी. सो फॉर ए बिग डेटा सेट इट इज कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव. ज्यादा हमारी मशीन को एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा. सेम विद द कंप्लीट लिंकेज आल्सो. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट अप्रोच? बोलिए. ओनली वन एस्पेक्ट इज बीन कंसीडर. सिर्फ सिमिलरिटी कंसीडर कर रहे, डेटा को हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे. सेम इज द इश्यू विद द कंप्लीट. ओके. अब इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? बताइए. We can calculate distance between 1 and 4, between 1 and 5, between 1 and 6, between 3 and 4, means all paired distances निकाल सकते हैं. बोलिए. Can we do in the same way between 2 and 4, between 2 and 6, between 2 and 5, right? And we take the average also. So this is known as average linkage, right? Which is the mean of all paired distances. So this is better in some way. किस तरह से better है? Because whole of the data has been utilized and the clusters so formed are stable in nature. Drawback क्या है? हमको calculations बहुत करने पड़े, isn't it? Right? कोई और मेथड? सपोज ये इसका सेंट्रोइड है. सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? जहां चीजें स्टेबल हो. स्टैटिस्टिक्स में हम सेंट्रोइड कैसे कर सकते हैं कि मीन ऑफ 1 2 3. सपोज ये इसका सेंट्रोइड है और ये किसका सेंट्रोइड है? C2 का. C2 का मतलब एवरेज ऑफ 4 5 and 6. So we can calculate distance between C1 and C2. So this method is known as centroid linkage. कह सकते हैं इसको, right? The results from the centroid linkage are approximately same as the average linkage. लेकिन इसमें थोड़ा सा आउटलायर्स का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मीन. और आपको मालूम होगा मीन इज बैडली अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स. ओके. सो दीज आर द मेथड्स which consider the distance actually. So these methods are known as linkage method. There is one more method very popular in scikit-learn. जब हम लोग analytics को teach करते हैं तो very popular, that is known as Watts method. Right? It is based upon variances. Internal variance की क्या importance है यहाँ पर?
इंटरनल वेरिएंस की क्या इंपॉर्टेंस है? इंटरनल वेरिएंस होमोजेनिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, राइट? हम क्या चाहेंगे, हमारे क्लस्टर्स ऐसे बने कि उनकी होमोजेनिटी मेंटेन रहे। तो when you club two clusters, so obviously यूनिट्स अलग अलग मिल रहे हैं, तो होमोजेनिटी क्या होगी? कम होगी। होमोजेनिटी कम होने का मतलब है इंटरनल वेरिएबिलिटी या इंटरनल वेरिएंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट? सो इफ गिवन द चांस, तो हम इस इंक्रीज को क्या करना चाहेंगे? कम बढ़ाना चाहेंगे, राइट? सो व्हाट्स मेथड यूजेस दिस अप्रोच? So according to the Watts method, those clusters are being clubbed, right? That will result in minimum increase of the values. Clear है? I am repeating. According to the Watts method, those clusters are being merged. That will result in minimum increase of the values. Okay? So that is known as Watts method. इसको एक फॉर्मूले का भी हम लोग नाम दे देते हैं। फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? ओके, इसका मतलब क्या हुआ? n1 n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दो क्लस्टर्स में। ये पहले का सेंट्रोइड है, ये दूसरे का सेंट्रोइड है, हमने इसको स्क्वायर कर, राइट? सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द वॉट्स मेथड। ओके, सो अप्रोचेस आपको क्लियर हो गए। सो वी हैव अ नंबर ऑफ अप्रोचेस दैट कैन बी यूज्ड so to consider the agglomeration, linkage method, centroid method and the variances method. Okay, again, why so many methods? Because कोई भी एक मेथड एब्सोल्यूट नहीं है, तो अगेन देयर इज अ चैलेंज। और अगर आप लोग इन मेथड्स को यूज कर देंगे, देन डेफिनेटली रिजल्ट्स में भी डिफरेंट। इज दैट ओके, राइट? सो यहां तक सब लोग क्लियर है? सो वी विल बी फाइनली डेवलपिंग द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हम इसको रन भी कर सकते थे, लेकिन आपको खाली ये दिखाने के लिए, we will see that there will be a hierarchy, a tree-like structure will be there. We have discussed agglomerative cluster, ये हमने डिस्कस कर लिया। We have discussed different linkages. Okay, right? So now we have the data. अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो हमारे साथ रन कर सकते हैं। We go to analyze. राइट? बिना क्लिक करे बताइएगा जिन्होंने रन नहीं करा है। वेयर वी विल बी हैविंग इन दिस ड्रॉप क्लासिफाई। वाई क्लासिफाई? कल आप लोगों ने देख लिया था क्या? वाई क्लासिफाई? एनीवन? बिकॉज क्लासिफिकेशन भी क्या होता है? वी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स सिमिलर। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताइए, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को भी क्लासिफिकेशन कहते हैं। कल आप लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी क्लासिफिकेशन किया था। यहां हम लोग इसको भी कर रहे हैं, क्लस्टर एनालिसिस से भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जिन्होंने पढ़ा है, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन वन साइड एंड क्लस्टर एनालिसिस ऑन द अदर साइड, दोनों के क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस? यस, उसमें बाइनरी होता है, लेकिन बाइनरी को हम लोग मल्टी नॉमिनल भी तो कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट क्लासिफिकेशन एंड दिस क्लासिफिकेशन? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, उसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मींस वी नो फोर हैंड कि कौन सा केस किस ग्रुप में जा रहा है, ये हमको पहले से मालूम था, राइट? दैट इज ए सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ क्या आपको मालूम है कि केस नंबर 1 किस ग्रुप में जाने वाला है? दिस इज एन अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट? दिस इज एन एक्सप्लोरेटरी टेक्निक। हम लोग एक्सप्लोर करके निकालने वाले हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हमको मालूम है, वी just want to know कि what is the reason for that classification. So this is the difference between classification by logistic regression or discriminant on one side and the classification by cluster analysis. Okay, so we go to analyze, then go to classify. ठीक, आपको देखिए डिस्क्रिमिनेंट नीचे दिखाई दे रहा है, डिसीजन ट्री भी आपको दिख रहा है, isn't it? Right?
Then we have hierarchical clustering. So this is the dialog box. We will be selecting all these 6 clustering variables. हमने सब साथ में ले लिया. Is that okay? Right? Now, label cases by, अगर मान लीजिए हमारे पास डेटा का डिस्क्रिप्शन होता, that case number 1 is Masood, case number 2 is Akash, case number 3 is Anupma, case number 4 is Mukesh, right? So हम ये भी जानना चाहते हैं. यहाँ पे क्योंकि नेम से क्लासिफिकेशन नहीं है, then there is no point of using label cases by. ठीक? Okay. So I am repeating that again. We go to MLR, right? In the classify, we will be using hierarchical clustering. Fine. So this is the dialog box of the hierarchical clustering. We will be selecting all these 6 clustering variables. Fine. Right. Now, here by default, clustering is of cases. ठीक? अगर हम clustering by variables कर दे तो क्या होगा? We get an equivalent result of EFA. Right? वो grouping किसकी create कर देगा? Right? कल संजय सर ने भी बताया था कि we can use cluster analysis in place of EFA also, so to create dimensions or grouping of variables. My question is, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग EFA पढ़े ही नहीं, हम लोग क्लस्टर एनालिसिस पढ़े और दोनों से काम चला ले. तो why we study cluster EFA? वो बात की चीज है. Why we study EFA? Why clustering analysis cannot replicate the EFA? कर सकते हैं लेकिन करते नहीं. हम लोग EFA तभी नहीं करते when the assumptions that is required for EFA fulfill नहीं होते हैं, तो हम लोग मजबूरी में we use clustering so to create clusters of the variables. करते क्यों नहीं? देखिए ये जो मेथड है, this is a heuristic method, right? तो इसकी जो differentiation power होती है, that is very weak as compared to the method that is being substantiated by the statistical reason. So obviously that is a well-defined method जो पूरे PCA पे based है, right? Eigen values पे based है. So obviously EFA always gives better results as compared to that is being done by the cluster analysis. Is that okay? So we can do, but we avoid doing that. Fine? चलिए. अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं because this data set will be used for the next case also. Right? So just to show you, यहाँ पे terms क्या है? Statistics. Statistics में हम लोग क्या create कर रहे हैं? Agglomeration shape. अभी हम आपको दिखाएंगे. We are not considering the clustering membership. इसको अभी हम none ही रहने देते हैं. Is that okay? Right. Next आइए plots में. देखिए ISIL diagram already mentioned है, but my recommendation is for a big data set, हमको नहीं required है. It is better कि आप ISIL graph को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, because the results that can be derived by the dendrogram, अभी हम dendrogram बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, that is a hierarchical structure. The same results can be defined by the ISIL graph. So ISIL मालूम है ना? आप जैसे वाली मूवीज देखिए जहां पे स्नो केव्स होती है ना, तो जो इस टाइप से होता है ना, जो स्नो नीचे हो जाती है एज चाकू की तरह जो दिखती है, दैट इज नोन एज आइसिल. ओके, राइट. इसको हम क्यों करवा रहे हैं कि इफ यू हैव ए बिग डेटा सेट, तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा मशीन टाइम यूज होता है, एंड देयर आर इन नंबर ऑफ केसेस आपकी मशीन अगर नई नहीं है तो हैंग भी कर सकती है. ओके, और बाकी एनालिटिक्स में इसको हम लोग कभी नहीं यूज करते हैं बिकॉज इट टेक्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द टाइम. डेंडोग्राम इज रिलेटिवली इजियर फॉर द मशीन, तो हम डेंडोग्राम से काम कर चलाएं. ओके, राइट. नाउ इन द मेथड्स, व्हाट इज द डिफॉल्ट मेथड? वी आर कंसीडरिंग बिटवीन ग्रुप लिंकेज. देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट वी आर गोइंग विद द डिफॉल्ट मेथड, दैट इज द between group linkage. Between group linkage means we are considering the average linkage method.
ओके, और भी मेथड है, इफ यू चेंज यू विल गेट some different results like nearest neighbor, furthest neighbor, centroid clustering, Watt's method, right? So we are using this method between group linkage, and this is a इंटरवल वेरिएबल कंसीडर करें, हम लोग बाइनरी नहीं ले रहे हैं। बाइनरी होता तो वी कैन यूज स्क्वायर यूक्लिडियन डिस्टेंस, अगर काउंट्स के फॉर्म में होता वी कैन यूज का स्क्वायर मेजर। आपको मालूम है कि जो का स्क्वायर है वो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है। अब काउंट्स की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको मान लीजिए क्लस्टरिंग करनी है, आपको जैसे मान लीजिए स्मोकर्स की क्लस्टरिंग करनी, राइट? तो आप ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ना कि यू आर ए स्मोकर या यू आर नॉट ए स्मोकर, आपको स्मोकिंग पसंद है कि नहीं पसंद है, राइट? आपको उसकी इंटरनल करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? यू कैन cluster them on the basis of number of cigarettes that they smoke during a day. So that is based upon the count, right? तो जहां पे काउंटिंग होती है, या मान लीजिए आप इसे शॉपर्स स्टॉप को क्लस्टरिंग करनी है अपने कस्टमर्स, ठीक, वो अमाउंट के बेसिस पे नहीं कर रही, वो चाह रहा है कि फुटफॉल ज्यादा हो। फुटफॉल का मतलब समझते हैं, विजिटिंग द शॉपिंग मॉल, क्योंकि फुटफॉल फाइनली किस में कन्वर्ट हो सकता है, शॉपिंग में होता है। तो फुटफॉल में वो मेजर कैसे करेंगे? यस और नो से तो नहीं करेंगे, करेंगे हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन इज कमिंग टू, या हाउ मेनी कस्टमर्स आर कमिंग इन द मॉर्निंग, हाउ मेनी कस्टमर आर कमिंग इन द इवनिंग ऑन द डिफरेंट डे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग काउंट। इज दैट ओके? अपने डेटा सेट में वी आर यूजिंग द इंटरवल मेथड। क्लियर है सबको? ठीक। Now we can transform them also. At present, I am not transforming them because everything is on the same scale. लेकिन अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना हो तो वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द जेड स्कोर। जेड का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है। वी कैन नॉर्मलाइज ऑल्सो in the range 0 to 1 or -1. So there are n number of methods that are available that you can use. At present, I am not using. इसमें भी आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन दोनों तरह से है, बाय द वेरिएबल एज वेल एज बाय द केसेस। केसेस हमने आपको बताया था, ने शेयर्स एंड यस शेयर्स। तो आप इस तरह से भी कर सकते, दोनों एक साथ नहीं हो पाए। ओके, तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि आप डेटा सेट में वेरिएबल्स की स्टैंडर्डाइजेशन पहले कर लीजिए, केसेस का स्टैंडर्डाइजेशन यू कैन डू थ्रू दिस मेथड आल्सो। कहां पे? हाँ, तो प्रेजेंट देखिए, बाय डिफॉल्ट अगर आप यस कह रहे हैं तो 1 आएगा, और नो कह रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक, कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि हमको इस कोडिंग को चेंज कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए डिजीज का प्रेजेंस कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग अगर डिजीज की स्टडी करते तो सक्सेस मानते हैं कि डिजीज का होना, और फेलियर किसको मानते हैं? डिजीज का ना होना। लेकिन कुछ लोग का होता है कि नहीं, डिजीज नहीं है तो हम उसको यस माने। तो आप इस कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, यू कैन चेंज द कोड्स आल्सो। ठीक, डिफॉल्ट में 1 का मतलब यस है और 0 का मतलब, ठीक है। हाँ, बाइनरी है ना, यस नो मतलब, तो यस का मतलब 1 है, नो का मतलब क्या होगा? 0। आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 0 कर दीजिए। नहीं, तब तो इंटरवल में आएगा ना, वो इसमें आएगा। हम इसको यूज ही नहीं कर रहे ना बाइनरी को, हम लोग यूज किसको कर रहे हैं? इंटरवल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेट वहां पे चीजों को स्केल पे यूज किया। फाइन, इज दैट ओके? राइट, सो वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज इन द मेथड। सेविंग आपको मालूम है, इफ यू पुट द ऑप्शन ऑफ सेविंग तो हमारे इसी सिस्टम पे जाकर के क्या होता है, क्लस्टर्स ऑब्जर्वेशन सेव हो जाते हैं। ओके, व्हेन वी शुड यूज दिस, नॉर्मली वी स्टडी दिस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और इस टाइप की टेक्निक्स सुपरवाइज्ड लर्निंग या रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं। बट व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट और व्हेन यू आर डूइंग सम रिसर्च पेपर, ऑलवेज रिकमेंडेशन इज, सबसे पहले आप ईडीए करिए। ईडीए आपको सबको मालूम है, डेटा प्रोसेसिंग और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जस्ट टू मेक योर डेटा अ गुड क्वालिटी डेटा। उसके बाद इस आपको करना चाहिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड द क्लस्टर एनालिसिस, राइट? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेटा। डेटा स्ट्रक्चरिंग के काम आता है, राइट? डेटा में कोई चीज इंटरेस्टिंग है या नहीं, फॉर दैट पर्पस वी यूज
फैक्टर एनालिसिस एंड द क्लस्टर एनालिसिस, राइट। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आपको जैसे आपने फैक्टर एनालिसिस नहीं करा, आपने सीधे रिग्रेशन रन कर दिया, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट रिजल्ट्स आर बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द मल्टी कोरिलेशन। लेकिन अगर आप ईएफए से चेक कर चुके हैं तो यू कैन क्रिएट द डायमेंशन, देन यू कैन यूज देम फॉर एनी सुपरवाइज्ड लर्निंग, चाहे रिग्रेशन में यूज करें या लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इज दैट ओके? सपोज हमने पूरे पूरे डेटा सेट में रिग्रेशन रन कर दिया। अब जिन्होंने रिग्रेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, जैसे हम लोग के जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट, उनको मालूम है कि रिग्रेशन एनालिसिस इज एक्चुअली जो उसमें हम y निकालते हैं, दैट इज द एवरेज रिग्रेशन। रिग्रेशन का असली नाम क्या होता है? दैट इज द एवरेज रिग्रेशन। हम हमेशा क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालते हैं। तो क्या होता है, पूरे डेटा सेट का वो एक एवरेज प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए हमारे डेटा सेट में 2-3 तरह के सेगमेंट्स हैं, तो वो क्या करेगा? सबको मिला करके प्रोवाइड कर देगा। सबको मिला करके प्रोवाइड करने में जो हमारा रिजल्ट होता है वो कैसा हो जाता है? जेनेरिक रिजल्ट हो जाता है। इट माइट बी पॉसिबल कि एक सेगमेंट में, एक क्लस्टर में रिजल्ट्स का इंप्लीकेशन अलग हो, दूसरे में इंप्लीकेशन क्या हो? अलग हो। सो व्हाट इज द बेटर अप्रोच? कि आप पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए कि वेदर योर डेटा कंटेन सम सेगमेंटेशन और सम क्लस्टरिंग और नॉट। अगर हमको लग रहा है कि क्लस्टरिंग है हमारे डेटा सेट में, तो वी शुड रन either regression or the logistic regression separately to different segments। तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली क्या होते हैं? बेटर आए। ठीक, हम आपको एक रिसर्च पेपर भी दिखाएंगे, अपना ही लिखा हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने यही किया था कि फर्स्ट वी हैव created the segments, then we use some supervised learning tool in the different segments। Fine, is that okay? सो रिकमेंड, तो इसलिए आपको सेव की जरूरत पड़ेगी। सेव से फायदा क्या होगा? आपके वेरिएबल्स उसी में सेव हो जाएंगे एंड यू कैन रन द रिग्रेशन एनालिसिस बाय यूजिंग फिल्टर टू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देंगे। फाइन, चलिए, तो ये हमने ओके कर दिया एंड दिस इज द आउट। अब पहली टेबल का तो कोई खास रोल नहीं है, इट इज जस्ट टू गिव्स अस अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। इन दिस केस इज बीइंग मेड फॉर द टीचिंग पर्पस, सो इसमें कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं। नाउ दिस इज द एग्लोमेरेशन टेबल। आपको दिख रहा है एग्लोमेरेशन? आपके सिस्टम पे भी होगा। वी हैव 19 स्टेजेस। व्हाई 19 स्टेजेस? व्हाट वाज आवर सैंपल साइज? 20, राइट। इसका मतलब ये जो पहला स्टेज है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इट इज शोइंग द कंबाइनिंग ऑफ एनी टू। और लास्ट वाली 19th स्टेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि दैट ऑल केसेस, ऑल सैंपल्स आर बीन क्लब्ड इनटू वन। सो स्टेज नंबर 19 मींस क्लस्टर 1, स्टेज नंबर 18 मींस क्लस्टर 2, स्टेज नंबर 17 मींस क्लस्टर 3 एंड सो ऑन। और स्टेज नंबर 2 मींस 19 clusters, right? 18 clusters, isn't it? Okay. अब सबसे पहले किन केसेस को मिक्स किया गया है? 14 एंड 16, राइट? तो किन किन क्लस्टर्स को मर्ज किया गया? केस नंबर 14 एंड केस नंबर 16 हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैं कौन से केसेस? केस नंबर 14 और केस नंबर 16 को देखिए। Do they deserve to be clustered at the first stage? Variable number 6 same reading, variable number 5 same reading, variable number 4 same reading, variable number 3 same reading, variable number 1 and 2 बहुत ही minor सा difference है, right? So by nature they appears to be very close to each other, है कि नहीं? अगर आप 6 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस पे इसको सोचिए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम। यहां पर भी दिख रहा है। So that distance is being calculated here, right? This is the, यहाँ पे जो आपको कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, this coefficient is actually the average linkage। अगर इसको आप चेंज कर देंगे, सिंगल लिंकेज कर देंगे, तो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू विल बी चेंज। वॉट्स कर देंगे, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। So heading will always be the coefficient. So coefficient is just showing the linkage, right?
ये आपको क्या शो कर रहा है कि उनके बीच में कितनी प्रॉक्सिमिटी है या कितना सेपरेशन है, कितनी होमोजेनिटी है या कितनी हेट्रोजेनिटी है। क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, देखिए ऊपर से नीचे तक देखिए क्या पैटर्न है, बहुत डिफाइंड पैटर्न है। दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो व्हाई दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर? क्योंकि मैंडेट था क्लस्टर एनालिसिस का कि डेट इस एग्लोमेरेशन का मैंडेट क्या है कि उसको सबको मिक्स कर देना है। तो शुरू में एल्गोरिथम इज फाइंडिंग द सिमिलर क्लस्टर्स, तो उनको मर्ज करता हुआ चल रहा है, बट उसका मैंडेट है कि सबको एक में कर देना है। तो इवन जो डिसिमिलर क्लस्टर्स भी हैं, जो बहुत एक दूसरे से अलग भी हैं, उनको भी फाइनली ले जा करके उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इज दैट ओके? So this is the squared Euclidean distance if we use the approach of averaging. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब देखिए इसमें करा क्या गया है। सबसे पहले किसको मिलाया गया? क्लस्टर नंबर 14 एंड 16 को मिलाया गया, ठीक, राइट। तो पहले स्टेज में किसको मिलाया गया? क्लस्टर नंबर 14 और क्लस्टर नंबर 16 को मर्ज किया गया। ओके, तो जब इसको मर्ज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो लोअर डिनोमिनेशन है, हम अपने क्लस्टर का नाम क्या रख देते हैं? एज पर दैट लोअर डिनोमिनेशन। तो 14 और 16 में लोअर डिनोमिनेशन कौन सा? 14 है। तो देयर विल बी अ न्यू क्लस्टर विद द डिनोमिनेशन 14। लेकिन फर्स्ट स्टेज के बाद जब भी 14 आएगा, इसका मतलब उसमें क्या है, एक मिनट, उसमें क्या होगा, 14 और 16 होगा। तो अब आप इसमें आप देख रहे हैं ये इसके बाद दोबारा 14 किस स्टेज पे आ रहा है? थर्ड पे। थर्ड पे किसको मर्ज किया गया? 10 एंड 14। सो हम एक बार फिर से अनॉट यूज कर देते हैं। थर्ड स्टेज पे जाने पे क्या हुआ, ये 14 चल रहा है, फिर किसको मर्ज किया गया? 10 के साथ, ठीक। नाउ एट द थर्ड स्टेज 14 इज एक्चुअली 14 एंड 16। यहां पे मर्ज करने के बाद जो क्लस्टर बनेगा उसका डिनोमिनेशन क्या रखा जाएगा? 10। इज दैट ओके? So from third stage and onward, 10 will consist of 10, 14 and 16. अब नेक्स्ट 10 एंड 14 के बाद किस स्टेज को आप देखें? 8। आपको दिख रहा है? हमको अपनी मर्जी से नहीं बता रहे, जो आउटपुट में लिखा उसी को कर रहे हैं। 8th स्टेज पे जैसे ही जाएंगे किसको मर्ज किया गया? 4 एंड 10। तो 8th स्टेज मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, तो दिस इज 4 और ये क्या आ रहा है? 10। इसको मर्ज किया गया। So the name or the denomination of new cluster is 4, right? Okay? किस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है? ट्री बनना है कि नहीं? अगर हम सबको बना देंगे तो देन इट विल बी अ ट्री। दिस इज अ हायरार्की। सबको क्लियर हो गया? अब नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस वर्टिकली, ठीक। इसको हॉरिजॉन्टली जस्ट ए मोमेंट, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो सब वो बता, ओके। राइट, अब आप इसको देखिए यहां पे, ये आपको डेंडोग्राम दिख रहा है। द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड वर्टिकली, ये उन्होंने हॉरिजॉन्टली बना। फाइन, ओके, राइट। आपको इसको थोड़ा वर्टिकली सोचते तो बेटर होगा। मालूम नहीं ये क्यों हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, आई डोंट नो। जब भी हम लोग उसके थ्रू करते हैं साइकिट लर्न लाइब्रेरी के थ्रू, तो हमेशा वर्टिकल बनाया। वर्टिकल इज बेटर टू बी एक्सप्लेन एनीवे, राइट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले 14 एंड 16 को मिलाया गया, राइट। तो 14 एंड 16 का ये हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह से मिलाते हुए चले गए। फाइनली एवरीथिंग इज बीइंग क्लब्ड इनटू वन। फाइन, राइट। नाउ इन दिस डायग्राम इनिशियली आपको ये क्या दिख रहा है, ये कम डिस्टेंसेस पे क्लबिंग की गई है। बाद में ये जो क्लबिंग हो गई, ये क्या हो गई,
डिस्टेंस बढ़ गया है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द हिट्रोजेनिटी। शुरू में डेटा होमोजीनियसली मिल रहा था तो हम लोग पास पास मिलाते हुए चल रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे द हिट्रोजेनिटी इंक्रीजेस और ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। सो इन द एग्लोमेरेशन टेबल द कोफिशिएंट कॉलम इज देयर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है? तो अगर आप कोफिशिएंट कॉलम को यहाँ पे रख दीजिएगा, ऑब्वियसली इट इज एन स्केल, एग्जैक्टली वो वैल्यूज नहीं है, बट इट इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ द सेम थिंग जो वहां पे आया। ओके, क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक। तो हम लोग इस डायग्राम को भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट टू शो यू कि कैसे एग्लोमेरेशन हुआ, कैसे हायरार्की विल बी क्रिएटेड। अब अगेन कम टू द कोफिशिएंट कॉलम। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कुछ और ऑब्जर्व किया? चलो हम आपको हिंट देते हैं। आप शुरू का पार्ट देखिए और एंड का पार्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, शुरू में एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने पे डिफरेंसेस आर वेरी स्मॉल, सेम नहीं है आपको, क्योंकि डिसिमल के सिर्फ 3 प्लेसेस दिया इसलिए आपको लग रहा सेम है। दे आर नॉट सेम बट दे आर वेरी क्लोज। बाद में ये क्या हो गया, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 38, 38 से 48। तो ये कोफिशिएंट एकदम से क्यों बढ़ने शुरू हो गए? नहीं, अच्छा लैंग्वेज यूज करिए, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हिट्रोजेनिटी बढ़ रही है, राइट? क्योंकि क्या बढ़ रही है? हिट्रोजेनिटी बढ़ रही है। इज दैट ओके? बोलिए। ठीक। अब अगर हम लोग एक बार फिर से इस पे आए अपने नोट्स पे, तो क्लस्टर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्लस्टर शुड हैव कंपैक्टनेस, राइट? मतलब उनकी इंटरनल होमोजेनिटी ज्यादा होनी चाहिए और एक्सटर्नल हिट्रोजेनिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तो वहां पे क्योंकि इंटरनल होमोजेनिटी दे रखा है, तो मतलब हम इंटरनल होमोजेनिटी से बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। इज दैट ओके? राइट। सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलें तो वी शुड रिकमेंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स एज, हमको 19 रिकमेंड कर देने चाहिए थे कि? बोलिए। 19 करते तो बहुत ज्यादा होमोजेनिटी मिलती, राइट? सो बहुत ज्यादा कंपैक्टनेस दिखाई देती। बट वी शुडंट रिकमेंड 19 नंबर ऑफ क्लस्टर्स का, तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। हमारे सैंपल्स में 20 में अगर आपने 19 क्लस्टर रिकमेंड कर दिए तो सेगमेंटेशन कहां से बना, राइट? सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स शुड नॉट बी अनड्यूली लार्ज। नंबर ऑफ क्लस्टर्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी तो हम उसका कुछ एक्शन ले पाएंगे उस पर। ठीक। तो अगर हम उसके बेसिस पे जाएं तो हमको नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 रिकमेंड कर देने चाहिए। अगर हम 2 नंबर ऑफ क्लस्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर वेरी लिमिटेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो, उसका लेवल ऑफ हेटेरोजेनिटी कितना दिखाई दे रहा है आपको? 48 दिख रहा है, राइट? सो बोथ सिचुएशंस आर बैड, अगर हम शुरू में डिसाइड करते हैं या बाद में डिसाइड करते हैं। ठीक। हमारा कंसर्न क्या है कि क्लस्टर्स की हेटेरोजेनिटी अननेसेसरली बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो कहां एकदम से बढ़नी शुरू हो गई? कहां बढ़नी शुरू हो गई है? केस नंबर 14 से कहां बढ़ी है? 10 से 11 ही तो हुआ है, राइट? एक एक यहां से यहां बढ़ा है, ठीक? फिर कहां बढ़ा है? फिर 14 से 20 बढ़ा है, फिर कहां बढ़ा है? 20 से 38 बढ़ा है, राइट? ठीक। अगर हमको लगता है कि दिस जंप फ्रॉम 11 to 14 इज ए बिग जंप, so how many clusters we are recommending? 1 2 3 4 5 clusters we are recommending. Is that okay? If we think that the jump of 14 to 20 is a big thing, so we are recommending 4 clusters. If we think 20 to 38 is a big jump for the heterogeneity, then how many clusters we are recommending? We are recommending 3 clusters. Is that okay? This is a subjective decision so far. मतलब ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि कितने क्लस्टर्स वो रिकमेंड करें। ओके,
दो वी कैन यूज थम रूल क्या यूज कर सकते हैं कि दैट वेयर वी हैव द हाईएस्ट जंप इन द हेट्रोजेनिटी वी शुड स्टॉप बिफोर दैट. सो इफ वी गो विद दैट थम रूल तो हमको कितने क्लस्टर्स रिकमेंड करेंगे? देखो 3. We should recommend 3 clusters. Why? Because this is a big jump. 95% का करीब जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 से वैल्यूज 38 हो गई है, राइट? तो 95% का जंप हो रहा है. तो दिस इज अ बिग जंप. सो इफ वी डोंट वांट टू अकोमोडेट दिस बिग जंप तो हमको कितने पेज को ले लेना चाहिए? वी शुड रिकमेंड 3 क्लस्टर्स. ओके, अगेन हम लोग फिर से रिपीट करें, दिस इज एज मच साइंस एज आर्ट्स. दिस इज अ डिसीजन टू बी टेकन बाय द रिसर्चर. फाइन, क्लियर हो गया? लेकिन इस सिचुएशन में वी आर गोइंग विथ 3 क्लस्टर्स. फाइन, एनी क्वेश्चन? यस. हाँ, डेंडोग्राम से आपको लेना है तो जहां पे यू विल बी गेटिंग, देखिए अब हम कुछ लाइंस आपको ड्रॉ कर रहे हैं. इफ वी ड्रॉ दिस लाइन, हाउ मेनी क्लस्टर्स आर देयर? 1 2 3. ओके, if we draw line from this, right? 2 cluster, 1 तो हो ही नहीं सकता है. 2 clusters है कि नहीं है? Right? If we draw line from here, how many clusters are there? 1 2 3 4. Right? So again we use a thumb rule. अब जैसे आप इसको देखिए, आप इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑलवेज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर 2, सॉरी और 3. आप यहाँ पे इस उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे करेंगे तो ऑलवेज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर 2. ठीक, यहाँ पे करेंगे तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर 4. ठीक, तो सबसे स्टेबल पोजीशन आपको कहाँ मिल रही है? वेयर वी हैव द लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. तो लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे आपको दिख रही है? 3 के लिए, राइट? सो द मोस्ट स्टेबल सोल्यूशन कैन बी 3. अगेन दिस इज जस्ट बाय द ऑब्जर्वेशन. It is not necessary that we can identify where we have the largest horizontal distance. हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, right? So you can decide number of clusters using dendrogram. Fine, clear हो गया सबको? Right. So we have identified number of clusters as 3. इसको हम आगे यूज करेंगे. Just for the concept, how we decide number of clusters. We have discussed the hierarchical clustering. हमने आपको बताया स्टॉपिंग रूल जो हमने डिस्कस किया. कैसे we decide the stopping rule? The step after that heterogeneity measures exceed a sudden value or make a sudden jump, right? Another method is large percentage in the heterogeneity. ये सभी methods हैं. There are some other methods also जो अभी हम इस सिस्टम में नहीं यूज कर पाएंगे. These are some other methods also. Okay, now we have some other approaches also जो अभी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे. We can use the elbow rule. कल आपने elbow rule पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स्क्रिप्ट प्लॉट. So we can use elbow plot also. We can use silhouette score also. ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे after some time. So these are the different methods that can also be, right? लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है तो we have to do some calculations for that. Okay? तो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि वी आर गोइंग विद नंबर ऑफ क्लस्टर्स एज 3. ओके, एनी क्वेश्चन? राइट. सो नाउ हम लोगों ने देखिए 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए. नंबर 1, व्हाट आर द क्लस्टरिंग वेरिएबल्स. नंबर 2, हाउ मेनी क्लस्टर्स आर. ठीक, नाउ वी शुड answer one more question. What will be the profile of that clusters?
Okay, so for that purpose, I will be discussing this k-mean clustering that is known as non-hierarchical. Okay, ठीक, इसको हम लोग जो मेथड यूज करेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, वी विल बी यूजिंग द k-mean clustering. K means we give forehead, we give a prior number of clusters as 3, right? जैसे हम लोग नॉन हायरार्किकल क्लस्टरिंग या k-mean क्लस्टरिंग में आएंगे, आपसे पहली चीज क्या डिमांड करेगा, हाउ मेनी क्लस्टर्स शुड बी देयर. अभी हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा उसमें देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइनिंग हाउ मेनी क्लस्टर्स, राइट? इसीलिए वी हैव स्टडीड हायरार्किकल क्लस्टरिंग फर्स्ट. नाउ आई एम मूविंग टू दिस मेथड. ओके, अब इसके हम लोग अप्रोचेस करते हैं कि हाउ, जस्ट ए मोमेंट. ओके, राइट, इनको कहीं पे थोड़ा सा वाइट स्पेस, चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, राइट? या इसको दूसरी उस पे कर दे. Okay, now we know that k equals to 3. हमको ये 3 क्लस्टर्स करने हैं. One method is, हमने एक क्लस्टर डिफाइन करा C1 और एक रेडियस डिफाइन कर दिया, राइट? जितने भी केसेस इसके अंदर आ रहे हैं दे आर पुट इन क्लस्टर 1. ओके, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेज पे क्या कहा, राइट? सेकेंड क्लस्टर डिफाइन करा, एक पर्टिकुलर रेडियस डिसाइड कर ले, जितने भी केसेस है उसको उसमें रख दिया. इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, थर्ड क्लस्टर डिफाइन किया, जितने भी केसेस थे रिमेनिंग उसको इसमें रख दिया, राइट? दिस अप्रोच इज नोन एज सीक्वेंशियल थ्रेशोल्ड. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल थ्रेशोल्ड, राइट? दिस अप्रोच इज नोन एज सीक्वेंशियल थ्रेशोल्ड. क्लियर सबको? ठीक. अदर अप्रोच कैन बी, सिंस वी नो दैट देयर विल बी 3 क्लस्टर्स, तो हम लोगों ने क्या करे, एक साथ तीनों क्लस्टर्स करे और जो प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है उनको एक साथ उसमें पुट कर दिया. दैट इज नोन एज पैरेलल थ्रेशोल्ड. इज दैट ओके? नाउ द प्रॉब्लम इन दिस टू अप्रोचेस इज, once a case is being put in one cluster, वो दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता है. Means there is no improvement in the clustering solution. Is that okay? For example, हम ये ले कि मान लीजिए हमारे क्लास में 2 क्लस्टर्स, हमने आपको 2 ग्रुप्स में बिठा दिया, ठीक है? चाहे हमने एक एक करके बिठाया सीक्वेंशियल थ्रेशोल्ड के थ्रू, या हमने पैरेलल थ्रेशोल्ड में बिठा दिया. अब हमने ऑब्जर्व किया, मान लीजिए हमको लगा ये जो स्टूडेंट है ये इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन स्टूडेंट को ट्रांसफर किसमें कर देंगे, सेकेंड ग्रुप में कर देंगे, राइट? तो दैट इज नोन एज इटरेशंस. हम किसी एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे, दैट इज नोन एज इटरेशंस. सो इसको करने से इस ग्रुप की इंटरनल होमोजेनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, एज वेल एज इस ग्रुप की भी इंटरनल होमोजेनिटी क्या होगी, सेम. अगर मान लीजिए ये जो पार्टिसिपेंट है इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक से नहीं मैच कर रहे हैं, तो उनको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक? सो इन दैट वे इंटरनल होमोजेनिटी विल इंक्रीज ऑफ द 2 ग्रुप्स. और वंस इंटरनल होमोजेनिटी इंक्रीजेस तो एक्सटर्नल हेट्रोजेनिटी भी क्या होनी चाहिए, राइट? इसका मतलब ग्रुप्स कैसे बनने शुरू हो जाएंगे, कंपैक्ट, इंटरनली और एक्सटर्नली सेपरेटेड. तो यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए. So this is known as optimizing partitioning method. Means we perform this algorithm a number of times, तो उसको हम लोग iterations कहेंगे. In that manner we start from a basic solution, initial solution, और धीरे धीरे हम solutions को क्या करते चले जाते हैं, improve करते हैं. कब तक करते चलेंगे, when there is an improvement. जब तक हमारा जो improvement है या जो differences आ रहे हैं वो converge होने शुरू नहीं हो जाएंगे.
वंस वो कन्वर्ज हो जाएंगे, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, सो दैट इज नोन एज वी शुड स्टॉप एट दैट पोजिशन. सो इन दैट मैनर वी विल बी गेटिंग दोज क्लस्टर्स. जो क्लस्टर्स किस तरह के शो करें कि अब clusters become stable. So this is the final solution. So this approach is being used by k-mean clustering, and that method is known as optimizing partition. Right? Obviously, ये manually नहीं किया जाएगा. It will be done by some algorithm, but the concept is that. Right? Clear हो गया? So this approach is known as right. ये आपको सब दे रखे. This is known as optimizing partitioning approach. Right? This is known as optimizing partitioning approach, and we will be using k-mean clustering. Okay? Right? So we will be doing here. Right? इसको हम लोग करते हैं. We go to analyze. Fine. Then we go to classify. Then we go to k-mean clustering. Fine. Right? What are the clustering variables? These are the clustering variables. Right? हम लोग कितने क्लस्टर से आ रहे हैं? 3. Right? नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने अभी हमने आइडेंटिफाई किए थे? 3. आप 3 नहीं लेना चाहिए, 4 ले सकते हैं, डजंट मैटर, बट वॉट एवर देयर शुड बी सम एंट्री इन द कॉलम. राइट? We can directly use classification, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि how the improvement is there, so we will be using iterate and classify. Right? अब iterate में देखिए, iterate में क्या है? मैक्सिमम इटरेशन कितने दे रखे? Yes. Just to show you, हम इटरेशन को 1 कर दें. Just to show you है. आप लोग इसको भी मत करिएगा, वरना बाद में कंफ्यूज होंगे कि दो आउटपुट है, कैसे हम इंटरप्रेट करें. ओके? राइट? कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है? 0. मींस देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन द सॉल्यूशन. जो चेंज ऑफ वेरिएबिलिटी है, चेंज ऑफ हेटेरोजेनिटी है, वो हम 0 लेकर के चलते हैं. ओके? हमने कंटिन्यू किया और हमने इसको ओके कर दिया. क्या लिख करके आया? वार्निंग पढ़िए. Iteration stopped because the maximum number of iteration was performed. Iteration failed to converge. Right? Means we are not able to converge to the optimum solution. Is that okay? So what is the message? If you have a big data set, so you should have provision for a big number of iterations. Okay? Right? इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम आपको एक केस और दिखाएंगे, उसमें इट विल बी रिक्वायर्ड. सो वी गो टू क्लासिफाई. राइट? और यहाँ पे हम लोग ने इटरेशन में क्या, जो ओरिजिनल फिगर है वो 10 ही रहने दिया. अगर आपको लग रहा है कि इवन 10 में नहीं कवर होगा, तो इसको आप क्या करते हैं? यू कैन कन्वर्ट इट टू 100. इज दैट ओके? राइट? तो ये कंटिन्यू किया. देन वी गो टू सेव. सेव में हम आपको जस्ट टू शो वी आर यूजिंग द क्लस्टर मेंबरशिप. फाइन? ठीक. इन द ये कर लिया. देन वी गो टू द ऑप्शन. ऑप्शन में हम लोग एक चीज ले रहे हैं, एनोवा टेबल, जस्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग, एंड वी हैव क्लस्टर इंफॉर्मेशन. क्लस्टर इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं. सिर्फ जस्ट आई एम यूजिंग इट टू डिस्कस समथिंग, इसलिए हम लोगों ने इसको cluster information. Fine? Clear? And save we have already taken, and we put OK. Right? आप देख सकते सेव का इंपैक्ट क्या आया है. Right? Now we have the Q1, Q2, Q3. Right? अगर आपको इस डेटा पे, सपोज यू हैव टू रन रिग्रेशन, सो आप इस पे बहुत आराम से रिग्रेशन रन कर सकते हैं. राइट? देखिए, उसमें एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन वेरिएबल. किसी ने यूज किया है? अगर आपको पूरे डेटा सेट पे नहीं रन करना है, तो आप क्या करें? क्लस्टर नंबर ले ले एंड पुट 1. सो ओनली
the regression analysis would be run only for those cases where we have cluster number 1, right? Segmentation का जो benefit है. So if आप filter लगा के भी कर सकते हैं, यहाँ पे filter आपको already दे रखा है. Fine, right? So for that purpose we can use this information. अभी हम लोग इसको discuss नहीं करें, right? So this is our final output, right? As you see here, सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिख के आया? कन्वर्जेंस हैज बीन अचीव. सेकेंड स्टेज पे कन्वर्जेंस आ गया, लिखा आपको, राइट? व्हाई द कन्वर्जेंस इज, क्योंकि अब जो चेंज इन द क्लस्टर सेंटर है, वेरिएबिलिटी में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल हो गया. सो वी हैव द कन्वर्जेंस, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस आउट. अब हम लोगों ने क्यों ऐसा किया था? राइट, एक मिनट. हम आपको एक सिचुएशन और दिखा रहे जो हमने अपने रिसर्च पेपर में किया था. जस्ट टू मूव फॉरवर्ड, यहां बताइए नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने रिकमेंड करेंगे? नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने कर सकते? नहीं, 3 तो नहीं होंगे. फ्रॉम 56 to 57 there is no change. Either you recommend 57 to 79 is a big jump. So if you consider this jump to be the largest one, so you will be recommending 2 clusters. दूसरा बड़ा जंप कहां दिख रहा है? Right? So again this is debate. इस research paper में we have used 4 clusters. Means we consider 48 to 56 as a big jump. Right? But this is not the highest jump. Right? So again this is as much as art as science. ठीक, हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किसके थ्रू करा था? रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, मतलब दैट इज एक्सेप्टेबल. इट इज रिलेटेड टू कंप्लेंट हैंडलिंग बाय सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के थ्रू था. वी यूज दिस फॉर 4 क्लस्टर्स. अभी हम पेपर भी आपको दिखा दें. ठीक, इसमें आप देख रहे हैं दिस इज अ बिग डेटा सेट. सैंपल साइज इज 1100. ओके, एंड अराउंड 14-15 वेरिएबल्स थे. थोड़ी सी मल्टी कोलिटी थी, वो हम लोगों ने इग्नोर कर दी थी. तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कन्वर्जेंस कौन सी स्टेज पे हो रहा है? 18th स्टेज पे, राइट? तो इवन 10th स्टेज तक भी अगर हम 10th स्टेज पे रोकते तो दैट इज ए मींस फर्दर इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, राइट? सो ये आपको ट्विक करना पड़ेगा एज पर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर डेटा. फाइन, क्लियर हो गया? राइट, नाउ वी आर कमिंग बैक टू दिस आउट. ये आपको दिखाई देगा. सो दिस इज द इनिशियल सोल्यूशन जो हमने आपको बताया था. थ्रू दिस 2 इटरेशन दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. ओके, ठीक. जो लोग रन नहीं कर रहे उसका एक स्क्रीनशॉट ले. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फाइनल क्लस्टर सेंटर. हमको बताते हुए चलिए. ओके, राइट? Remember what is the scale? 1 to 7, where 1 is representing disagreement and 7 is representing agreement. So 3 and 4 क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, राइट? चलो इस टेबल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग दिस टेबल लेट अस कंसीडर, ओ सॉरी एक चीज रह गई क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया. या आ गया एनोवा. ये आपको एनोवा दिख रहा है, राइट? एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. व्हाई एनोवा इज एनीवन? नहीं, चलो अब हम ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली स्टैटिस्टिक्स वालों से पूछते हैं. कुछ हमारे भी स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ बाहर वाले भी बैठे हैं, राइट? व्हाई एनोवा टेबल? अगर कोई और बता देगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा,
लेकिन अगर ये लोग नहीं बताएंगे तब तो फिर इन लोग से निपटा जाएगा। हाँ, व्हाई एनोवा टेबल इज देयर, मींस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेबल। देखो पूरा 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 जो उसका कॉन्सेप्ट है क्लस्टरिंग का, दैट इज बेस्ड अपॉन होमोजेनिटी वर्सेस हेट्रोजेनिटी, राइट। अगेन क्या होनी चाहिए, इंटरनल हेट्रोजेनिटी शुड बी लेस, एक्सटर्नल हेट्रोजेनिटी शुड बी हाई। यहां तक क्लियर? सो राइट, सो अगर इसको हम यहां पे कंसीडर करें, तो यहां पे कर लेते हैं, चलिए। सो इसका मतलब यूनिट्स के बीच में हमेशा वेरिएबिलिटी होगी, देयर इज ऑलवेज अ टोटल वेरिएंस और टोटल वेरिएशन होगा, राइट। ओके, वी आर क्रिएटिंग क्लस्टर्स एक्चुअली। सो इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और दूसरा क्या हो सकता है, राइट। ये खाली स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए नहीं है, बाकी के लिए भी हम कर सकते हैं कि नहीं, कि बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और विद इन ग्रुप वेरिएशन। फॉर ए गुड क्लस्टरिंग सोल्यूशन बिटवीन ग्रुप वेरिएशन क्या होना चाहिए, बोलिए। ये सेपरेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट शुड बी हाई। और विद इन ग्रुप वेरिएशन क्या शो कर रहा है, ये लेस होना चाहिए, राइट। यहां तक क्लियर, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस टेबल। इसमें ये जो एफ स्टैटिस्टिक है, एफ स्टैटिस्टिक्स ब्रॉडली क्या ली जाती है, ब्रॉडली नॉर्मली हम लोग एफ स्टैटिस्टिक्स क्या लेते हैं, बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप लेते हैं, राइट। So that is representing that situation. So this F statistics actually represent the ratio of separation to compactness, right? What उसमें उसमें क्या आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, compactness आ रहा है। So logically higher the F value, more will be the good thing। होगा कि नहीं होगा, बताइए। मतलब F की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या इंडिकेशन हो रहा है, कि वो वेरिएबल इज क्रिएटिंग हाई एक्सटर्नल वेरिएशन एज वेल एज लो इंटरनल वेरिएशन कर रहा है, क्रिएट, राइट। सो वी विल बी यूजिंग दिस टेबल दैट इज नोन एज एफ टेबल। अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल इज हैविंग द हाईएस्ट एफ वैल्यू, शॉपिंग इज फन, राइट। इसका मतलब अमंग दिस क्लस्टरिंग वेरिएबल मेन कंट्रीब्यूशन क्लस्टरिंग में कहां से आ रहा है, शॉपिंग इज फन से। नेक्स्ट किसके थ्रू आ रहा है, आई कंबाइंड शॉपिंग विद ईटिंग आउट आ रहा है। इस टेबल का भी फोटो कॉपी ले लीजिए, एक वो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, राइट। हो गया, राइट। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैव a screenshot of this ANOVA table also, fine, right। Okay, so let us write the clustering variables that are available here. पहला वेरिएबल कौन सा है, right? The first one is shopping is fun. The first one is shopping is fun. Second क्या है, I combine shopping with eating out.
नेक्स्ट क्या है? डोंट केयर अबाउट शॉपिंग. नेक्स्ट, try to get best buy. Next, all done. Save a lot. We can save a lot by now we have 3 clusters like C1, C2, and finally C3. राइट? अब आप लोग को एक फाइनल क्लस्टर टेबल सेव करवाई थी, जरा वैल्यूज बोल दीजिएगा. 3.5. नेक्स्ट 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1.7, और ये ओके. तो वी आर कंसिडरिंग ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 7. 1 का मतलब क्या था? डिसएग्रीमेंट. और 7 का मतलब क्या था? एग्रीमेंट. एंड 3 and 4 आर न्यूट्रल. सो इफ वी इंटरप्रेट दिस, ये क्या आएगा? ये क्या आया? ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट में वैल्यूज बोले, जल्दी जल्दी बोलते चलिए. C1 की वैल्यू शॉपिंग प्लस ईटिंग पे बोल रहा है, कितना? 3 पॉइंट समथिंग, मतलब न्यूट्रल. नेक्स्ट 1 पॉइंट समथिंग डिसएग्री, एग्री. ओके, नेक्स्ट रिमेंबर व्हाट इज द स्टेटमेंट? आई डोंट केयर अबाउट शॉपिंग. इससे एग्री कर रहा है. इसका मतलब वो पर्सन क्या है? शॉपिंग की केयर नहीं करता है. और यहाँ पे क्या स्कोर आया? ये एग्री. इसकी स्कोर बोल दीजिए एक बार. और यहाँ का स्कोर क्या है? नहीं नहीं, ये स्कोर क्या था? और यहाँ पे डिसएग्री. तो वो डिसएग्री किस चीज से हो रहा है? I don't care about shopping. Means that person care about shopping. आगे बोलिए. Best buy. Try to get best buy. 6. Agree. Next. Next. Okay. Next. 5.83 मतलब agree. Near to 7 है. Next. हम लोग ब्रॉडली इंटरप्रेट कर रहे हैं, बिकॉज अगेन द सेम स्टेटमेंट मस्ट डिपेंड अपॉन द एक्सप्लेनेशन बाय द रिसर्चर. ओके, आप 3 और 4 में डिफरेंस कर सकते हैं इफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट आइए. ओके, राइट. अब नाउ बाय बिहेवियर क्लस्टर नंबर 2 एंड क्लस्टर नंबर 3 कैसे लग रहे हैं? मेजरली एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग क्लस्टर नंबर 2 and 3. ठीक. अब बताइए क्लस्टर नंबर 3 जो है किस तरह के लोगों का ग्रुप है? Those who consider shopping as fun. Those who combine eating with shopping out. इसका मतलब कौन लोग शॉपिंग के साथ खाना वाना सब खा लेते हैं? दो who really enjoy shopping. ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? डोंट केयर अबाउट शॉपिंग से एग्री है, मतलब फॉर देम शॉपिंग इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? दे केयर फॉर द शॉप. और इन सब पे न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहने देते हैं. तो C3 किस टाइप के लोगों का क्लस्टर है? शॉपोहोलिक्स हो सकता है. इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? शॉपोहोलिक्स
या दोस्त हुआ टू मच इन द शॉपिंग, वर्ड्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब C2 इज अपोजिट टू दैट। तो ये लोग कैसे हो सकते हैं? जो शॉपिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, शॉपिंग अवॉइडर, शॉपिंग एवर्जर, राइट, जिनको शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। इज दैट ओके? क्लियर है? अब क्लस्टर नंबर 1 को सोचिए। देखिए यहाँ पे तो न्यूट्रल पोजीशन ले रहा है, तो न्यूट्रल इज अ बिट डिफिकल्ट टू बी डिफाइंड, सो वी मूव टुवर्ड्स द एंड, मतलब लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स पे आ रहे हैं। ट्राई टू गेट बेस्ट बाय, बैट फॉर बजट एंड सेव अ लॉट बाय कंपेयरिंग प्राइसेस। बाकी सब पे वो न्यूट्रल है। इसका मतलब वो पर्सन इज नॉट, डजंट लाइक शॉपिंग एज वेल एज डजंट डिसलाइक द शॉपिंग। वो शॉपिंग को कैसे सोचता है, राइट? सो इस तरह के पर्सन को हम लोग क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिकल शॉपर या रैशनल शॉपर, इकोनॉमिकल शॉपर, इस टाइप के लोगों को कह सकते हैं। इज दैट ओके? इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 3 सेगमेंट ऑफ द कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू देयर शॉपिंग बिहेवियर। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्त हुआ रैशनल शॉपर, दूसरे वाले क्या हो गए? शॉपिंग एवर से तीसरे वाले क्या हो गए? ठीक। अब सपोज आपने रिग्रेशन अप्लाई कर रखा, वेरी सिंपल रिग्रेशन, यू वांट टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन शॉपिंग वॉल्यूम, राइट? तो क्या तीनों में एक ही जैसा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, राइट? हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड में वाला रिजल्ट नहीं आए, जो थर्ड में आए। तो आपके लिए मैसेज क्या है कि एडवर्टीजमेंट शुड बी ट्यून ओनली टू दोज पीपल हु आर शॉपहोलिक्स। ठीक। आपको अगर डिस्काउंट का ऑफर देना है, राइट, तो आपके उसमें टारगेट में कौन लोग आएंगे? C1 वाले लोग आएंगे, C2 आएंगे या C3 आएंगे? C1 वाले आएंगे ना। मतलब देखिए, आप डिस्काउंट दे ना दे, C3 क्या होगा? शॉपिंग करने आएगा ही। C2 नहीं आएगा, चाहे आप दे या नहीं दे, लेकिन C1 क्या हो जाएगा, राइट? यहां तक क्लियर? मान लीजिए आपको शॉपिंग मॉल स्टैब्लिश करना है, आपके कैचमेंट एरिया में डोमिनेंस है C3 वालों का। ज्यादातर लोग यहाँ लखनऊ के शॉपिंग मॉल से लोग फेमिलियर हो। देर से डोमिनेट कैचमेंट एरिया मीन्स मतलब जहां से लोग आते हैं वहां पे, तो C3 का डोमिनेंस है। किस तरह के शॉपिंग मॉल स्टैब्लिश करें? सहारा मॉल जैसा करेंगे या प्लासियो जैसा करेंगे? राइट? प्लासियो जैसा क्यों करेंगे? जहां पे पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, गेमिंग के लिए भी चाहिए, एंड देयर वी कैन अफोर्ड हायर और द एक्सपेंसिव आइटम। लेकिन अगर डोमिनेंस C1 जैसे लोगों का होगा तो किस तरह का करेंगे? बिग बाजार खोलेंगे, राइट? खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, राइट? क्योंकि बिकॉज दैट विल बी डोमिनेटेड बाय दोज पीपल जिनके लिए डिस्काउंट और वैल्यू शॉपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर C2 का डोमिनेंस है तो इट इज बेटर नॉट टू ओपन, राइट? यहां तक क्लियर है? तो दिस इज अ ब्रॉड केस दैट इज रिलेटेड टू शॉपिंग। अब हम लोग, ये क्लियर हुआ सबको, राइट? ऑब्वियसली दिस केस इज बीइंग मेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। चीजें, थिंग्स लुक वेरी सिंपल, रियल लाइफ में इतनी सिंपल होती नहीं, बट इन ऑर्डर टू टीच हमने इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें कुछ टेबल्स और इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ केसेस दैट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड कि किसका डोमिनेंस है। ठीक। एक चीज और आ रही है, दैट इज द माइक्रो एनालिसिस। आपको एक क्लस्टर मेंबरशिप दिख रही है। कंसीडर केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3, राइट? केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3, what is the common thing in between them? They belongs, both are shopaholics. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक। जो चीज सेंटर के जितने पास होगी वो क्या होगी? वो उसका टिपिकल बिहेवियर होगा। अगर मान लीजिए हम लोग, चलिए इधर आपको इसमें ले लें, सपोज दिस इज C3, ये इसका सेंटरॉइड है। अब एक पर्सन A है, एक पर्सन B है, आपको दिख रहे हैं? A इज वेरी वेरी नियर टू सेंटरॉइड, B इज फार फ्रॉम, राइट, पेरिफेरी में है। तो हु इज मोर ऑफ ए शॉपaholics इन बिटवीन A एंड B? A.
So behavior of A is more typical to shopaholics as compared to, right? So इस टेबल का क्या रोल हो सकता है? वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन केस 3 एंड केस 4, लेकिन ये सिर्फ माइक्रो लेवल एनालिसिस के लिए यूज किया जाए, ओके, कि इन दोनों में 3 is more of a shopaholics as compared to, sorry, case number 1 is more of a shopaholics as compared to case number 3. Okay, right? So this is about the cluster analysis जो हमने broadly ले लिया, right? अब एक चीज और important हो सकती है. A big question is to decide how many clusters are there. Suppose हमने 3 clusters को लिया, suppose some other person takes number of clusters as 4. So obviously the question arises how we will be deciding which solution is the best, right? So in order to decide number of clusters, we can use these two approaches that is known as elbow rule, right? Elbow rule कैसे use करते हैं? On the x-axis we can have number of clusters and on the y-axis हम लोग क्या ले सकते हैं? Within group sum of square. आपको दे रखा था, आप इस तरह का बनाएंगे तो देयर विल बी एल्बो. इनिशियली क्या हो रहा है? जब नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम है, देन देयर विल बी लार्ज विदिन ग्रुप वेरिएंस, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो क्या होता जा रहा है? रिड्यूसेस. So where you have to stop? Elbow पे, because elbow के बाद unnecessarily number of clusters increase करने का there is no benefit. ठीक, एक मेथड ये हो सकता है. What is a drawback of the elbow method? नहीं, सब्जेक्टिविटी के अलावा देखिए, देर आर 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लस्टर. नंबर 1, कंपैक्टनेस होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? सेपरेशन. सो एल्बो मेथड कंसीडर ओनली कंपैक्टनेस, इसमें सेपरेशन को नहीं कंसीडर किया गया है. मींस वी आर नॉट कंसीडरिंग वन एस्पेक्ट. So there is a better approach that is known as, जो SPSS से पॉसिबल नहीं है, that is silhouette score. ये क्या कंसीडर करते? इट कंसीडर बोथ बिटवीन ग्रुप वेरिएशन. बिटवीन ग्रुप वेरिएशन क्या होना चाहिए? हाई. और विद इन ग्रुप वेरिएशन क्या होना चाहिए? तो ये जो सिलोहेट स्कोर है, इसका फॉर्मूला है BI माइनस AI डिवाइडेड बाई, ये पाइथन में आपको या मशीन लर्निंग उसमें आपको मिल जाएगा, साइकिट लर्न में इट इज अवेलेबल, right? It is BI minus AI divided by maximum of BI minus AI, where AI is intra-cluster variation or intra-cluster distances, okay? Or BI is inter-cluster distances. तो इंट्रा-क्लस्टर डिस्टेंसेस क्या शो कर रहा है? होमोजेनिटी, राइट? सो AI की वैल्यू लो होनी चाहिए और BI की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होना चाहिए कि नहीं? कि मतलब इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस कम होने चाहिए, सब आसपास होने चाहिए, और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस शुड बी लार्ज, तो दे शुड बी बिग, राइट? सो इसका मतलब है हायर द वैल्यू ऑफ SI, बेटर इज द क्लस्टर, right? So in order to decide clustering, we can go with the elbow rules or we can go with the silhouettes, right? Clear? Any question? बस 2 मिनट और. Any question? Right? So just to show you, देखिए ये जो पेपर है, जैसे हम आपको ये खाली दिखा रहे हैं, जस्ट ए मोमेंट, अभी हम शेयर करते हैं. Now screen is there.
देखिए ये जो पेपर था, इस पेपर को स्टार्ट क्लस्टरिंग से किया था, राइट, बट इट इज बेस्ड अपॉन मिक्स्ड मेथोडोलॉजी अप्रोच। इसमें क्लस्टरिंग करके वी हैव यूज एएचपी, एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस, एक मेथड होता है, राइट। तो इसमें पहले क्लस्टर्स क्रिएट किए गए, एंड आफ्टर दैट ऑन द डिफरेंट क्लस्टर डिफरेंट टूल्स आर बीइंग अप्लाइड। ये आपको मिल जाएगा कहीं पे, राइट, ठीक। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि दिस पेपर हम लोगों ने लिखा था 2000, पब्लिश हुआ 2010 में, 13 ईयर्स अगो, राइट, ठीक। और हम एक दूसरा पेपर दिखा रहे हैं जो लिखा तो कुछ दिन पहले गया था, पब्लिश अभी हुआ 2022 में, आफ्टर माय ज्वाइनिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी, राइट। नहीं नहीं, ऐसा लगा कि देयर विल बी हेट्रोजेनिटी, तो इसलिए हम लोगों ने करा। तो इसमें मल्टी मेथोडोलॉजी यूज किया गया है, मतलब ये सेलफोन के से रिलेटेड है। दो को कंपेयर किया गया था, एक तो मिलीनियल्स से जो 80 से 90 के बीच में हुए थे, दूसरी जनरेशन से जो 90 के बाद हुए, यानी 2000 के बाद हुए थे, राइट। तो इस पे भी पहले क्लस्टरिंग से क्रिएट किया गया, देन आफ्टर द रिलेशनशिप इज बीइंग एग्जामिन्ड, राइट। इन दो पेपर दिखाने का ऑब्जेक्टिव यह था कि क्लस्टरिंग इज अ गुड टेक्निक अगर आप if you go towards the publication purpose, right? So you can publish, and to make it generalize, हम लोग इसको किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये हमको पहले बोलना चाहिए, रह गया। जैसे इवन एक कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल डेटा साइंस, स्टार्स के भी क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, राइट। वी कैन यूज फॉर क्लस्टरिंग ऑफ different biological units or different genes, different viruses also, right, उसके लिए यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग और फिनांस का तो हमने एग्जाम्पल लिया ही है, राइट। सो इट कैन बी यूज, इवन आप लोग यूज भी करते हैं। अगर आप लोग अपने सेलफोन से न्यूज पढ़ते हैं, तो आप जिस तरह के न्यूज आइटम्स पढ़ते हो, हमेशा आपको वही न्यूज आइटम्स ऊपर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? दे आइडेंटिफाई, आपका रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करते हैं एज पर योर क्लस्टर। कुछ लोग स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ेंगे तो उनके ऊपर हमेशा हाईलाइट क्या होगा? स्पोर्ट्स न्यूज होंगे। कुछ पे क्या होगा? पॉलिटिकल न्यूज पढ़ते तो उनपे हाईलाइट क्या होगा? पॉलिटिकल, राइट। सो इट कैन बी यूज इन एन नंबर ऑफ केसेस, कहीं पर भी, इवन डिजीज के लिए। बायोस्टैटिस्टिक्स में, बायोलॉजिकल साइंसेस में भी इसका बहुत यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? कि जो डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट चीजें हैं, उनको क्लब करके किस तरह से हम एक कॉमन डिजीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो हाईली यूज टेक्निक है, एंड विद द एडवेंट ऑफ हाई कंप्यूटेशन पावर इसकी इंपॉर्टेंस और इवन उसमें जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह को प्रिडिक्ट करना है, तो अर्थक्वेक्स के भी प्रोन जोन बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? एक तरह की क्लस्टरिंग करी जाती है कि कहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो क्रस्ट के बहुत अंदर है, कहाँ पे क्रस्ट के ऊपर है। सो इट हैज एप्लीकेशन फॉर वेरियस डायमेंशंस, ठीक। दिस इज ऑल फॉर टुडे।